to implement the idea of vaccine passport. अगर सिर्फ स्टार्टिंग में ही ब्रीफ में दे देता हूं थोड़ा सा कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ वैक्सीन पासपोर्ट. इट इज सिंपली अ डिजिटल सर्टिफिकेट यू कैन से, or a certificate which can be carried in a digital format. A certificate which you can carry along with you in a digital format, that is simply a vaccine passport, which will certify or which will act as a proof that you have been vaccinated with a COVID-19 vaccine and you are hence safe. ठीक है, तो यही मतलब है यहां पे. So Israel has become the first country to introduce a certification system Now, apart from international travel, डोमेस्टिकली भी अगर आपको पब्लिक स्पेसेस एक्सेस करनी है तो उसके रिगार्डिंग भी ये सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है या ये वैक्सीन पासपोर्ट जो है काम करेगा. सो इजराइल ने क्या किया है, इस सर्टिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस्ड फॉर एक्सेस टू you can say certain public spaces. ठीक है, इसमें आप इमेजिन कर सकते हो, इट कुड बी रेस्टोरेंट्स, इट कुड बी hotels, it could be gyms, etc. So इन सब के रिस्पेक्ट में ये सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है इजराइल ने, दे हैव मेड इट मैंडेटरी नाउ फॉर पीपल टू एक्सेस सर्टेन पब्लिक स्पेसेस. मतलब सिर्फ ये है कि आप जो है वेदर यू आर सेफ और यू आर नॉट अ पोटेंशियल सोर्स हु कैन इन्फेक्ट अदर पीपल ऑल्सो. ठीक है, ये सर्टनली आ जाते हैं लाइक वी गेट सर्टिफिकेट एट कोविन पोर्टल. बिल्कुल, जैसे हमारे सर्टिफिकेट्स भी हम डाउनलोड कर सकते हैं या तो कोविन ऐप के थ्रू या फिर हम जो है डायरेक्टली कोविन पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट दैट यू हैव बीन वैक्सीनेटेड. फाइन. सो जो आइडिया है इसका, this particular idea for a vaccine passport, it is modeled on proof of vaccination. That is a proof of vaccination that the person or the holder of the certificate, the person or the holder of the certificate is safe. ठीक है, आइडिया बेसिकली सिर्फ इतना ही है दैट द पर्सन और द सर्टिफिकेट होल्डर इज अ सेफ and he can freely access all these places and also can have international travel or travel internationally. ठीक है, चलो. So let's discuss in detail this particular provision. I hope ये नोट कर लिया सभी लोगों ने. So even before the pandemic, ये आइडिया जो है, the idea of a vaccine passport, you can say, the idea was prevalent even before COVID. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड आने के बाद ही जो है पर्टिकुलरली ये सिस्टम को वर्ल्ड वाइड कुछ कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है. अर्लियर ऑल्सो द यूनाइटेड स्टेट्स हैड इम्पोज्ड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस or the United States had mandated that certain travelers from certain African countries, they will be required to carry these certificates for some types of diseases which were prevalent in Africa. ठीक है, तो वहां से इसको जो है आप कह सकते हो दिस इज नाउ एन एक्सटेंशन कि अब कोविड के टाइम्स में भी इसको यूज कर रहे हैं या फिर इसको मॉडल करके उसी बेसिस पे other countries are also using it. So even before this COVID pandemic struck, it was prevalent that certain African countries, or you can say travelers from certain African countries to the United States of America,
they were required to carry vaccination certificates. देखो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर कई अलग अलग तरीके की डिस्क्रिमिनेशंस की जो है एलिगेशंस लगती हैं, दो it is a kind of precautionary measure only, that certainly any country who's hosting an immigrant, or any country who's for that matter hosting an international traveler, they would want that international traveler to be safe so that their domestic population is not exposed to those risks. समझ रहे हो बात को? हर कंट्री को ये राइट है कि वो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के हितों की रक्षा करे, या अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन की जो हेल्थ है, पर्टिकुलरली क्योंकि यहां हम हेल्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सो एवरी कंट्री इज एंटाइटल्ड टू सिक्योर इट्स पॉपुलेशन ऑन इट्स हेल्थ फ्रंट, एंड सर्टेनली इफ यू आर allowing any foreigner to visit your country, you are particularly at a responsible, you are particularly responsible, you know, being the state, being the government of that country, it is your responsibility that if you are allowing any foreigner to come to your country, then you should guard the domestic population against any health hazard. कोविड के रिस्पेक्ट में बात मैं कर रहा हूं यहां पे, पर्टिकुलरली इन दी बैकड्रॉप ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है? तो यही वो चीज थी दैट they were required to carry vaccination certificate for certain diseases such as yellow fever. For certain diseases, as an example, you can cite that the yellow fever in which there is temperature of the body rises, and also jaundice is associated in yellow fever, that the body becomes pale, or the color of the eyes become pale yellow, that is why it is called yellow fever. तो in particular ऐसे diseases के लिए, such as yellow fever, travelers from certain African nations, they were required to carry these vaccination certificates before traveling to the United States. ठीक है? Sir, can we say this idea emerged from Africa? No, not emerged from Africa, but the United States. देखो, Americans, they are very, you can say, particular when it comes to the safety, security and the concerns of their own population. अगर उनकी खुद की पॉपुलेशन के सेफ्टी कंसर्न्स की बात आती है, then the Americans are very much, you can say, concerned. They are very much particular about the interests of their own domestic population. ठीक है? वो इसीलिए कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार एक और किसी नागरिक की जान जो है वो सस्ती हो सकती है, लेकिन एक अमेरिकी नागरिक की जान जो है ना वो बड़ी कीमती है. Although I agree, human life wherever it is precious, or for that matter human life or any other life, any form of life on earth is precious, but certainly the developed world, with respect to its citizens, they are more concerned about the life of their citizens. ठीक है? तो वहां से ये चीज जो है हम कह सकते हैं that the concept originated. ठीक है? Yes, certainly मोहित, ये कह सकते हैं कि जो कोविड पैंडेमिक आया और उसके बाद, क्योंकि देखो बात यहां पे जो है कि कोविड जो है कंटेजियस है बहुत ज्यादा, इट इज हाईली कंटेजियस, एंड फॉर दैट certainly these restrictions, they were implemented even more rigorously. और उसी के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो that this concept of restricted travel or certain restrictions being placed on travel, particularly the international travel. ठीक है? हमने ये भी देखा कि वो जो ट्यूब ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है, that you are traveling in a tube, that before boarding from, you can say, New Delhi to New York, before boarding from New Delhi, you will be required to carry a passport, a certificate that you are COVID negative. ठीक है? And in that tube, then you are traveling and you are landing at New York, and when you will return, then again you will need a certificate, a test that you are COVID negative, so that you are traveling in that bubble. जो हम air bubble के concept भी हमने देखा emerge हुआ in COVID times only. तो certainly ये process जो है faster हुआ COVID and the associated problems which came along with COVID. Fine. So this was the origin that we talked about with respect to the African countries being asked to produce certain certificates of vaccination with respect to certain diseases such as the yellow fever. ठीक है? और यहाँ पे if you want to mention, then you can mention that yellow fever is caused by which virus? Which virus does, or which virus causes the
yellow fever, it is the Aedes aegypti only. जो येलो वायरस की बात कर रहे हैं, इट इज कॉज्ड बाय एडिस इजिप्टी. नो नो नो, इट इज एजिस इजिप्टी. एजिस एडिस इजिप्टी वायरस है which causes your yellow fever, in which the condition is of high fever and jaundice. फाइन. सी चहक, जो एयर बबल कॉन्सेप्ट है वो सिंपली यही है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनली, फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यू दिल्ली टू दुबई यू आर ट्रैवलिंग. If you are traveling from New Delhi to Dubai, then before boarding the flight at IGI, or you can say at the airport in Delhi, you will be required to produce a test certificate, a COVID test certificate that you are negative. ठीक है, कि आपको COVID जो है, that you are not infected with COVID, and then you will be allowed to board that flight, and when you will land in Dubai, you will be again producing that certificate that yes, you are carrying it with you. ठीक है. जब आप वापस यू विल टेक द रिटर्न फ्लाइट, व्हेन यू विल टेक द रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू दिल्ली, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो अगेन दोबारा आपको जो है एक टेस्ट, फ्रेश टेस्ट करवा के अगेन यू विल बी required to have a fresh COVID test report showing that you are COVID negative. So that will be a bubble, that in that bubble you traveled from a negative state of COVID from Delhi to Dubai, and when you are returning, then also you are in that bubble only, meaning thereby that you were not infected COVID by COVID while you were traveling internationally. ठीक है, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है. चलो ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक ओरिजिन. if we were talking about the African nations and वहां से जो ये concept originate हुआ. So if we talk about the nomenclature briefly, then nomenclature we can simply base it upon the vaccine passports, that is a kind of proof only. So this is nothing but proof of, in a digital format, क्योंकि देखो नॉमेनक्लेचर सिर्फ समझाने का मेरा मतलब यही है कि जो पासपोर्ट है वो भी तो सिर्फ यही बताता है ना कि यस यू आर अ रेजिडेंट, you are a citizen of this country. If you are carrying an Indian passport, then the Indian government has certified that you are under the certification of the Indian government a citizen of the country. Fine, that is the basic idea here. कि अगर वैक्सीन पासपोर्ट है तो it certifies that you have been vaccinated. This passport here, it does certify that you have been vaccinated. So that was the nomenclature which is associated. Now if we talk about the functions, कि इसके थ्रू जो है आप अगर दो तीन चीजें कोई अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, then what are those things that, or what are those functions which you intend this vaccine passports to perform? Documents necessarily have to be digital, right? It can be a hard copy received at the time of vaccination. It may generally be digital. Yes, certainly that is the point. It may be digital but not necessarily. ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ डिजिटल ही होना चाहिए, but largely it is envisaged to be digital because the ease associated with digital passport is a lot more easier. ठीक है, उसको कैरी करना इजी है, उसको प्रोड्यूस करना इजी है. देयर इज नो यू कैन से उसमें कोई डर नहीं है कि इट विल बी लॉस्ट और एनी सॉर्ट ऑफ डैमेजेस कैन बी अकर्ड और एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज कैन हैपन टू दैट. Certainly Chehek, that is certainly that you can say this is not mandatorily digital.
It is not mandatorily digital. So we were talking about the functions. Coming back to the functions, so first function will be the same, that is it serves as a proof of your vaccination. तो एक तो चीज यही हो गई जो हम बात कर भी रहे हैं, दैट इट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ योर वैक्सीनेशन. देन it will help bypass the, if you are carrying it then it may help you, क्योंकि ये अभी अक्रॉस, देखो इसमें अभी सिर्फ एक चैलेंज जो है वो ये है कि अक्रॉस द वर्ल्ड देयर इज नो वन स्टैंडर्ड विच द कंट्रीज कैन फॉलो. अलग अलग देश जो हैं अभी अलग अलग तरीके से इसको सोच रहे हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं. देयर इज नो वन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ हैविंग अ वैक्सीनेशन पासपोर्ट एंड द बेनिफिट्स विच आर अलोंग विद अ वैक्सीनेशन पासपोर्ट. अगर आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट है तो उसके साथ आपको और क्या क्या फायदे मिलेंगे. तो इसलिए मैं लिख रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं इट मे हेल्प यू इन बाईपासिंग द क्वारंटाइन नॉर्म्स. It may help you bypassing the quarantine norms since you are deemed to be a safe traveler. क्योंकि आप जो है एक वैक्सीन पासपोर्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, इट मेक्स यू deemed to be safe and that is why you may not be mandatorily quarantined. अदरवाइज क्या है कि क्वारंटीन की जो फैसिलिटी है उसमें आपको यू विल बी केप्ट और यू माइट बी asked to home quarantine yourself for a certain period of time depending upon the country you're traveling, because different jurisdictions have different norms right now in place. And that is why in bypassing this quarantine norms, this vaccine passport, it may help you. Apart from that, another advantage or function it can serve is that digitizing the vaccination records. Digitizing the vaccination records. ठीक है, like in India, you can mention as an example the Co-Win portal. Fine. As an example for India, you can mention the Co-Win portal, जिसके थ्रू जो है आप डाउनलोड कर सकते हो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. Fine. I hope that is clear to everybody. Sir, isn't it possible that a vaccinated person still may be an asymptomatic? Yes, certainly we'll come to that. We will come to that. That is the precise thing which the World Health Organization has also said. We will come to that in a moment, Chehek. Wait for that. Fine. I hope ये सब लोगों ने नोट कर लिया था. Now, if we talk about certain other organizations, we'll come to the World Health Organization stance also. That what is the stance of WHO? उससे पहले लेकिन जो है the IATA, ठीक है, that is the International Air Transport Association. International Air Transport Association. Now, with respect to the thing which we were talking, के एक डिजिटल अगर फॉर्मेट में या नॉन डिजिटल फॉर्मेट में भी वैक्सीन पासपोर्ट आप अगर कैरी कर रहे हो तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. So similarly, on that thinking only, the IATA is developing an app, that is IATA Travel Pass. That is IATA Travel Pass. क्योंकि देखो जो हमने बात की थी कि
across the jurisdictions in the country or across different countries in the world, there is no one set standard या एक यूनिफॉर्म कोई ऐसी अभी तक सिस्टम नहीं है इन प्लेस जिसके थ्रू आप वैक्सीन पासपोर्ट्स जो हैं और उसके साथ क्या उसके बेनिफिट्स होंगे उसको आप इन्फोर्स करोगे. सो व्हाट द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इज डूइंग दैट टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म. This app will provide a common platform. देखो जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इट इज अ बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ द एयरलाइनर्स अक्रॉस द ग्लोब एंड व्हाट दे आर सेइंग इज कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ही अगर कोई ऐसा ट्रैवल पास हो जिसमें वैक्सीनेशन जो है किन लोगों ने करवा ली है वो सर्टिफिकेट अगर वहां पे ही अपलोडेड हो, then these airlines and the other actors involved with the international civil aviation industry or the international travel, they on this common platform will be able to verify whether the person has been vaccinated or not. ठीक है, अलग अलग जाके अलग अलग गवर्नमेंट्स या अलग अलग कंट्रीज के अथॉरिटीज के साथ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या हर एक पैसेंजर को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहना पड़ेगा एक वैक्सीन पासपोर्ट या एक डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर नॉन डिजिटल सर्टिफिकेट. सो व्हाट दे से दैट it will provide a common platform to airlines and other stakeholders. Common platform to airlines and the other stakeholders. So इन दोनों के लिए ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाएगा to check for the proof of vaccination and its validity. To check for the proof of vaccination and the validity. ठीक है. When was the IATA founded? International Air Transport Association. It was founded in which year? It was founded in 1945. हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है किसी को? Check now will come to your point, that is what is the stance of WHO. ठीक है, तो यहां पे देखो जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, इट कुड बी योर होटल इंडस्ट्री, इट कुड बी योर टूरिज्म इंडस्ट्री, दैट दे कैन आल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. ठीक है, तो देखो जो अब एक बात हुई थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इस पोर्टल पर लोड कर दो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. सी आदित्य, दैट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन. अभी इट इज स्टिल इन अ डेवलपिंग स्टेज, बट व्हाट आईएटीए हैज एनविसाज्ड या आईएटीए का जो प्लान है वो ये है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ऐसा हो जाए कि जहां पे एयरलाइंस जो हैं उनको हर एक पैसेंजर से ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए उनको ना बोलना पड़े. Simply you can upload your documents and the airlines will be able to verify it from that IATA travel pass itself. Fine, that is the idea. Yes, certainly development procedure में ही है. That is why we have said that they are developing this application. देखो यहां पे अभी चैलेंज ये है ना कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वैक्सीन लग रही हैं और उनकी एफिकेसी जो है, I was about to come to this point, but since you have already touched upon it, so I'll discuss it here itself. कि बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग सिनारियो है अभी कोविड को लेके. कुछ तो चीजें हैं कि अभी भी वायरस अगर म्यूटेट कर रहा है, नए स्ट्रेन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं, दे आर स्टिल यू कैन से नॉट वेरी क्लियर, और यू कैन से दैट इज स्टिल इन एवोल्यूशन. दिस इज व्हाट यू कैन से. ठीक है, दूसरी चीज है कि अलग अलग वैक्सीन जो लग रही हैं अक्रॉस द कंट्रीज इन द वर्ल्ड,
उनकी अलग अलग एफिकेसी है, अलग अलग पॉपुलेशन के ऊपर वो कितनी ज्यादा एफिशिएंट है या कितनी ज्यादा कारगर साबित होती हैं, वो भी अभी क्लियर नहीं है कंप्लीटली। तो उस सब की वजह से जो है अक्रॉस द वर्ल्ड in international travel particularly, we are yet to have a standard or a uniform code, or you can say a set of procedure, या आप कह सकते हो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, फाइन, एसओपी भी कह सकते हो या स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स कह सकते हो, which is right now the challenge associated. Fine, so we will talk that in the stance of WHO. So what is the stance of WHO? So as of now, WHO is against, or you can say it wants this idea to be deferred. Defer the idea of a vaccine passport. WHO क्या कह रहा है? WHO अभी सीधे सीधे या तो मना कर रहा है कि इस आइडिया को अभी इंप्लीमेंट करने का टाइम नहीं आया है, इट इज स्टिल टू अर्ली टू इंप्लीमेंट एन आइडिया ऑफ हैविंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट और अ वैक्सीन पासपोर्ट, और इट सेज दैट यू शुड डेफर इट, कि अभी नहीं, इसको कुछ टाइम बाद इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हमारे पास और डेटा है कोविड के रिस्पेक्ट में अवेलेबल, या फिर हम ये देख पाए कि लार्जली ग्लोबली हमने बहुत एक, you can say, majority chunk of the population has been vaccinated, and also we have data that that population has been effectively vaccinated, or you can say they will no more be asymptomatic carriers, as was mentioned by one student, कि अगर मान भी लो कि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है कोविड की, लेकिन क्या गारंटी है कि आप एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर नहीं हो, या ऐसा नहीं है कि आप जो है रिलैप्स नहीं है, फाइन, कि आप दोबारा इन्फेक्ट नहीं हुए हो कोविड से। तो वो सारी जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए WHO इज अगेंस्ट, और इट वांट्स डेफर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, एंड वी विल जस्ट राइट इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा apart from that the efficacy of COVID vaccines, this is across different countries, ठीक है। Also you can mention here that efficacy of different COVID vaccines, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि वर्ल्ड वाइड एक ही वैक्सीन जो है वो लग रही है। एफिकेसी ऑफ डिफरेंट कोविड वैक्सीन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। एक तो पहली बात तो ये है कि अलग अलग वैक्सीन हैं, जैसे हमारे यहाँ कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने डेवलप की है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, एस्ट्राजेनेका ने डेवलप की है। तो देर आर डिफरेंट कोविड वैक्सीन, एंड सेकेंड दे आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो इसलिए भी अभी WHO डज नॉट वांट एनी सच आइडिया टू बी इंप्लीमेंटेड। ऑल्सो they are saying that this particular idea or a vaccine passport, it may hinder what the WHO says, that any such idea of a vaccine passport अगर आप वैक्सीन पासपोर्ट मैंडेटरली इंप्लीमेंट करते हो, देन इट may hinder the equitable distribution of vaccines.
कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये मैंडेटरीली आप एनफोर्स करते हो तो जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं या जो एलीट हैं हु आर prosperous enough to afford international travel, they will be chosen first as against the elderly or the people with comorbidities who should be first administered. क्योंकि अभी भी सप्लाई जो है that is not very vast or that huge that you will be able to vaccinate all the people very soon. ठीक है, तो उसलिए it may hinder equitable distribution of COVID vaccine. That is the first inhibition or the first concern which WHO has. और ये equitable access जो है this we are talking globally. सिर्फ इंडिया के केस में ही नहीं है, WHO ग्लोबली बात कर रहा है कि ये पूरी दुनिया में ऐसा हो सकता है। आदित्य कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? देखो वैक्सीन पासपोर्ट वाला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है उसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर, मैं नहीं कह रहा, रादर WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि अगर आप वैक्सीन पासपोर्ट जैसी कोई चीज लागू करते हो, इसका मतलब क्या है? आप कौन सी पॉपुलेशन को केटर कर रहे हो? द रिच, द प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु कैन अफोर्ड इंटरनेशनल ट्रैवल, वही लोग कैरी करेंगे ना ये वैक्सीन पासपोर्ट्स। और बाकी लोग जो मजदूर हैं या और स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं सोसाइटी के, दोज हु आर नॉट रिच इनफ टू हैव इंटरनेशनल ट्रैवल्स, वो लोग तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। प्राइमरीली जो ग्रुप आप केटर कर रहे हो जिस ग्रुप को, वो प्रॉस्पेरस रिच ग्रुप है जो इंटरनेशनल ट्रैवल अफोर्ड करता है या जो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है। तो अगर आप मैंडेटरी कर रहे हो इस चीज को या डिजिटल फॉर्मेट में वैक्सीन पासपोर्ट जैसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, तो उससे ये हो सकता है कि वो लोग जो हैं दे विल बी द फर्स्ट हु विल बी केटर्ड और हु विल बी एडमिनिस्टर्ड विद द वैक्सीन, या जो वो लोग जो हैं above the priority of other people being vaccinated, those will be the sections of the society who will be garnering, or you can say who will be seizing the opportunity to get vaccinated first. ठीक है, तो वो लॉजिक है यहां पे जब हम कह रहे हैं इट में ग्लोबली हिंडर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन। और सिर्फ इसमें देखो यहां पे एक चीज और समझ लो कि सिर्फ सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं हो रही है। हम अगर बात करें, बहुत सारे अफ्रीकन नेशन जैसे हैं, या फॉर दैट मैटर बहुत सारे सब सहारन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, बहुत सारे एशियन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे जो लोग रहते हैं दे आर फ्रॉम दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर स्टिल अंडर डेवलप्ड। मैं जो समझा रहा हूं वो ये है बात यहां पे कि जो अंडर डेवलप्ड या रिलेटिवली पुअर कंट्रीज हैं, दोज हु आर द कंट्रीज विच आर नॉट वेरी प्रॉस्पेरस, उन लोगों को आप इसके थ्रू इस कॉन्सेप्ट के थ्रू उतना केटर नहीं कर रहे हो क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो उतना इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं अफोर्ड करती है। या आप ये कह सकते हो कि उनका इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ अभी उतना ज्यादा कोई एक्सपोजर नहीं है। फाइन, यू गेटिंग इट? दिस इज फॉर रिलेटिवली द रिचर कंट्रीज और द डेवलप्ड वंस which are having frequent international travels. So that is the point. रिचा, आपने खुद ही अपने डाउट में अपना आंसर लिखा हुआ है व्हेन इट विल डेवलप। ठीक है, when it will develop then will it remains to be seen that how it will be integrated with the domestic certificates or with the domestic jurisdiction of individual countries. Fine. The traveling will also become discriminatory since people who are vaccinated won't be given the opportunities. Certainly, देखो वो सारे challenges एक इस सब हेड में आपके फॉल करेंगे। यू कैन इमेजिन दैट विल बी अनदर चैलेंज विच विल बी एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जिसके लिए एक अभी जो WHO है इसी प्रिसाइज रीजंस की वजह से इट इज अगेंस्ट इट। ठीक है, और यहां पे बैकड्रॉप में इसके जरूर मेंशन कर लो दैट इट इज लिमिटेड वैक्सीन सप्लाई। The vaccine supply which we are having across the globe, it is limited vaccine supply, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, what the WHO has said that also hindrance on the front
मैक्सिमाइजिंग वैक्सीनेशन, या आप कह सकते हो बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन फॉर सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, इसमें हिंड्रेंस जो क्रिएट होगी दैट विल बी फॉर ओवरऑल ग्लोबल हेल्थ एज वेल, नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स बट फॉर ओवरऑल ग्लोबल हेल्थ ऑल्सो. Yes, certainly it will be against diversifying vaccination benefits. बिल्कुल ये पॉइंट जो है उसके एंटी काम करेगा. ठीक है, और प्रिसाइसली यही रीजन है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टांस उसका यही है कि इट इज अगेंस्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी सच कॉन्सेप्ट. फाइन, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर द कंसर्न्स. लेकिन अगर हम बात करें तो बेनिफिट प्राइमरली किसको होगा? द benefits of having a vaccine passport प्राइमरली अगर बात करें तो बेनिफिट्स भी उसी सेक्टर को होंगे विच वाज द वर्स्ट हिट, दैट इज द एविएशन इंडस्ट्री. सॉरी, दिस इज द एयरलाइंस. Apart from that, the हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, उसके अलावा आपका टूरिज्म सेक्टर. ठीक है, तो ये सारे जो हैं सेक्टर्स दे विल बी द मेजॉरिटी, दैट इज प्राइमरली दे विल बी बेनिफिटेड. ठीक है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कीप इन माइंड दैट दीज वर द सेक्टर्स हु वर ऑल्सो द वर्स्ट हिट, also the worst hit or you can say worst affected by COVID. ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ही है कि ये सबसे ज्यादा सेक्टर्स जो हैं अफेक्ट हुए थे लॉकडाउन का, जब लॉकडाउन इन्फोर्स हुआ अक्रॉस द कंट्रीज इन द वर्ल्ड और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गए पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रैवल पे, तो एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी. और साथ साथ जो डिपेंडेंट हैं क्योंकि देखो अगर इंटरनेशनल ट्रैवल है तो उसके साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज का जो है टूरिज्म सेक्टर भी चलता है, उनका हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ऑल दोस थिंग्स आर एसोसिएटेड. वो जो चेन है पूरी, एक इट इज अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज कि अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल हो रही है साथ में टूरिज्म इंडस्ट्री है विच इज डिपेंडेंट ऑन दैट, विच इज अर्निंग इट्स रेवेन्यू फ्रॉम दैट, एंड द हॉस्पिटैलिटी और द होटल इंडस्ट्री. So they were also the worst hit by COVID. And also, if such a concept of a vaccine passport is implemented, then the primarily these will be the sectors who will benefit out of it. ठीक है, अगर हम benefits की बात करते हैं तो certainly these were the countries who were worst hit by that. I hope ये नोट कर लिया है. अब इसके अलावा देखो another concern is or you can say another general concern, that is with respect to the privacy of individuals, or you can say privacy of individual health data. Now since this vaccine passport
ये जो है इट विल बी अवेलेबल टू, और यू कैन से इट कैन बी एक्सेस्ड बाय जो आपकी एयरलाइंस हैं, देन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो हमने बात करी कि होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसके अलावा एयरलाइंस तो है ही हैं। All of these will be having access to the health data of so many million people. ये छोटी बात नहीं है। Data, as they say, is the new oil. Data, as they say, is the new oil, and having access to so much of data in the form of a vaccine passport, that will certainly raise privacy concerns. ठीक है? And you can just write here that more so in the case of India, where we do not have India, where we don't have a standalone law on privacy. कि अभी भी जो है, although right to privacy has been extended as a fundamental right, but we do not have a standalone law on privacy in India right now, and that makes the Indian population particularly more vulnerable. हमारे तो वैसे भी डेटा सिस्टम्स में ब्रीच जो है वो इतनी आम मानी जाती है कि इट इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज एन इशू, कि जैसे ये तो नॉर्मल बात है, कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ अगर आपकी डेटा प्राइवेसी जो है वो ब्रीच करी गई? इट हार्डली इज अ कॉज ऑफ कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सोसाइटी और विद रिस्पेक्ट टू इंडियंस। हम उसको इतनी मामूली सी बात मानते हैं कि ये तो जैसे कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे केस में पर्टिकुलरली ये प्राइवेसी ब्रीच जो है दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जो ग्लोबली तो लोग कह ही रहे हैं कि आप इतना सारा डेटा जो है यू विल बी मेकिंग दैट ऑल दैट डेटा accessible to a lot many industrial players. Fine. Are you able to relate to it? हाँ जी, ये चीज समझ में आ रही है? Particularly in the context of India also. Yes, certainly China hindering privacy data. बिल्कुल, देखो ये तो है ही है ना. It will be a gold mine. It can be a potential gold mine for the countries who are having certain ulterior motives or who are working against the interests of India. अगर हम अभी ग्लोबल लेवल की बात छोड़ दें एक मिनट के लिए, सिर्फ अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में ही डिस्कस करें। बिल्कुल रिचा, आदित्य, देखो ये चीज तो है ही है ना। सर्टेनली द चाइनीज हैव देयर हैंड्स, ऑल्दो ऑफिशियली कुछ नहीं है क्लियर, या ऑफिशियली नहीं ये स्टेट किया गया है, लेकिन ये पता तो सबको है ही है कि जो चाइना की गवर्नमेंट है उसके स्पॉन्सर्ड कंपनीज जो हैं उनका रोल था इन अटैक्स में। The state sponsored companies in China were behind these cyber attacks, behind all these notorious activities on the cyber front. Certainly, तो वो वाला एंगल जो है वो सारा यहां पे आपका प्रिवेसी में आ जाएगा एट द डेटा फ्रंट। ठीक है, तो इन्हीं सब कंसर्न्स के चलते अभी जो है दिस वी कैन से इज द टाइम इज टू अर्ली टू इंप्लीमेंट अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस। फाइन, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो, एल्स विल मूव फॉरवर्ड। चलो ठीक है, ग्रेट। नाउ वी विल मूव टू a Niti Aayog discussion paper that is with respect to the revision of it is not just by Niti Aayog, other ministries, other players are also involved in it, but primarily this paper has been by the Niti Aayog for the
revision of the National Food Security Act. National Food Security Act of 2013. So आदित्य, कौन सा, ये नीति आयोग वाला या फिर आपका जो हम बात कर रहे थे वैक्सीन पासपोर्ट की? दैट विल कम अंडर दी ग्लोबल अफेयर्स, द इंटरनेशनल रिलेशंस, वो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर के डोमेन में आएगा, एंड द पॉलिसीज विच इंडिया हैज विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये देखना बाकी है कि हम एज सच उस कॉन्सेप्ट पे क्या डिसाइड करते हैं। ओके फाइन। सो coming to this particular topic, that is a discussion paper by Niti Aayog. Along with your chief economic advisor, along with the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, and the Food Ministry. This is the chief economic advisor. ठीक है, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आई राइट इट फुल, एडवोकेट मत लिख लेना। The chief economic advisor, the Ministry of Statistics and Program Implementation, and the Food Ministry, along with the Niti Aayog, they are having certain discussions, certain deliberations on the revision with respect to the National Food Security Act. And what Niti Aayog says, that they want a reduction in the coverage of नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, अगर सिर्फ ब्रॉडली बैकड्रॉप देखोगे तो नीति आयोग, ऑल्दो अभी ऑफिशियली या आप कह सकते हो कि लॉ में कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं, देयर हैज नॉट बीन एनी चेंज इंट्रोड्यूस्ड अंटिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. It is only in the deliberative stage, or you can say in the discussion mode only, that Niti Aayog is having, or it is having with the chief economic advisor, the Ministry of Statistics and Program Implementation, and the Food Ministry. And what Niti Aayog says, that they are of the view of reducing the coverage of the National Food Security Act. ठीक है, so before we move on to what the Niti Aayog has proposed, let's first quickly take a look at the NFSA's provision. So what does the National Food Security Act of 2013, that is the original act, it provides for subsidized rice, wheat, and coarse grains. Yes, yes, certainly आदित्य, एनएफएसए में कवरेज जो है रिड्यूस करने की बात हो रही है। अभी जो है एनएफएसए, इट प्रोवाइड्स as a legal right. All these things are provided as a matter of right, क्योंकि अगर आपने कानून बनाया है तो लॉ के अंतर्गत, या आप कह सकते हो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, द स्टेट इज बाउंड टू ऑनर इट्स कमिटमेंट. If you are enforcing any provision through a law of the parliament or a statute of the parliament, then certainly it is a mandatory
इट इज योर ऑब्लिगेशन टू डू सो. सो राइस जो है इट इज प्रोवाइडेड एट ₹3 पर केजी. This I believe you must be knowing. This is ₹2 per kg, and coarse grains at ₹1 per kg. Sir, sorry, silly question per subsidized. देखो मनीषा, सब्सिडाइज्ड का मतलब है कि देखो, जो अगर बाजार में आप खरीदने जाओ तो आपको ₹3 किलो या ₹2 किलो ना तो राइस मिलेंगे ना वीट मिलेगी. तो सरकार अपनी तरफ से जो है प्रोक्योर करके इन ग्रेन्स को, जो ऐसी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की जिसको पहले हम बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट से समझते थे, बाद में उसको फिर इन्होंने प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोलना शुरू कर दिया. तो सोसाइटी के उस सेक्शन को जो है आप सब्सिडाइज करके, मतलब अपनी तरफ से प्रोक्योर करके ग्रेन्स उनको सस्ते दाम पे दे रहे हो. दैट इज द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स. बिल्कुल एफसीआई का रोल उसमें है कि एफसीआई के थ्रू प्रोक्योर करती है, या आप कह सकते हो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इट प्रोक्योर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, एंड देन थ्रू द राशन शॉप्स, या आप कह सकते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके थ्रू इनको ये ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. चलो, so what we were talking about, that National Food Security Act as a legal right through the targeted public distribution system. This is targeted. The T stands for targeted public टारगेटेड का मतलब यही है कि उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो, दोज हु आर रियली इन द नीड ऑफ इट. फाइन, दैट इज द TPDS, targeted public distribution system, in which you are giving these rice, wheat and coarse grains at 3 to 1 per kg respectively. और जो ये रेट्स हैं, these rates are known as central issue price. That is CIP. फाइन, जिस पे आप प्रोवाइड कर रहे हो ये सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स, दैट इज रेफर्ड टू एज द सेंट्रल इशू प्राइस और द CIP एट विच यू आर प्रोवाइडिंग दीज ग्रेन्स, दीज फूड ग्रेन्स टू द पीपल. ठीक है, और पर्टिकुलरली यही जो CIP है इसी की रिवीजन की बात हो रही है, विच विल डिस्कस इट. हाँ जी, ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे. चलो ठीक है, आई होप ये नोट कर लिया सभी लोगों ने. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एलिजिबल हाउस होल्ड्स, under the current National Food Security Act, under section 3(1), this is under section, ठीक है, under section 3 clause 1, Antyodaya and Yojana household and some other eligible. Yes, priority and non priority, और priority में जो है अंत्योदया. ठीक है, देखो एक तो हो गया priority households and other is the non priority, that is you can say earlier classification के हिसाब से the above poverty line, the non priority households.
if you fulfill certain criteria, we are not going into the details of the criteria, but if you are not having a shelter, if you are an old aged widow not living on any pension, or if you have no agricultural land, these are some of the criterias. If you fulfill those criterias, then you fall under the priority households. ठीक है? एंड इसमें भी जो है देयर आर टू कैटेगरीज स्पेसिफिकली जो यहां पे बात हो रही है जिनको रिवाइज करने की, दैट इज वन इज द प्रायोरिटी हाउसहोल्ड, एंड इसमें अंत्योदय अन्न योजना, और यू कैन से द अंत्योदय कैटेगरी। और इनके लिए हम अंत्योदय अन्न योजना जो है वही चलाते हैं, दैट इज द अंत्योदय अन्न कैटेगरी हेयर इन द प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स। और जो रेस्ट अपार्ट फ्रॉम द अंत्योदय, दे अदर विल बी इन द जनरल प्रायोरिटी कैटेगरी। ठीक है? यस यस सर्टेनली एग्जैक्टली, दैट इज आई एम कमिंग टू दैट। जो अंत्योदय अन्न कैटेगरी है, AA कैटेगरी जो है, इसमें जो प्रोविजन है दैट इज ऑफ 35 kgs, एंड फॉर द प्रायोरिटी हाउसहोल्ड आदित्य, जो आप 5 kg वाली बात कर रहे हो, दैट इज फॉर द प्रायोरिटी हाउसहोल्ड, 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स। लेकिन अगर आप फॉल कर रहे हो अंत्योदय में, दैट इज दी वेरी पुअर कैटेगरी, मतलब इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि दे कैन बाय वन सिंगल मील इन अ डे। यस यस आदित्य, AAY जो है, देखो ब्रॉडली जब डिवाइड करोगे प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी में, अगर ब्रॉडली डिवाइड करोगे तो होगा प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी। फिर प्रायोरिटी में अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं, उसमें अंत्योदय जो है दैट इज द पीपल हु आर द मोस्ट पुअर। अंत्योदय जो कैटेगरी डील कर रही है, दैट डील्स विद द पीपल हु आर अनेबल टू हैव अ स्टेबल इनकम एट ऑल। मीनिंग इसका सिंपल मतलब यह है कि अंत्योदय योजना जो है उन लोगों के लिए है जो सस्ते दामों पर भी ग्रेन्स नहीं, फूड ग्रेन्स खरीद सकते। ठीक है? ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं जो हमने यहां बनाई है, लेकिन ये विद इन द प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स। दिस इज एक्सेप्ट दिस प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कैटेगरी, इट इज एक्सक्लूडिंग द अंत्योदयाज। ये क्लियर है आदित्य? जो ये वाली कैटेगरी है प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स की, इट एक्सक्लूड्स द अंत्योदय। उनके लिए ये प्रोविजन है 35 kgs का। यस यस सर्टेनली चेक, यस फॉर द हाउसहोल्ड इटसेल्फ। चलो ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। अब बात आती है रिवीजन की, कि जो रिवाइज करने की बात हो रही है, तो जो शेड्यूल 1 है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, so this schedule 1 of the national food security act at the time of enactment, या आप कह सकते हो जब ओरिजिनली 2013 में ये कानून पास किया गया था पार्लियामेंट से, सो द सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, what does the schedule 1 said, or it still mentions that the subsidized prices they were fixed, or you can say they were frozen। जो अभी हमने 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए पर केजी की बात की, 3, 2, 1 रुपए पर किलो या प्रति किलो,
that were frozen for a period or a term, you can say, of 3 years. मतलब ये हुआ कि जब 2013 में यूपीए 2 थी, which was the government at that point of time, it was the UPA 2 that was in power at the central level and that enacted the National Food Security Act back in 2013. उन्होंने जो शेड्यूल 1 रखा था एक्ट का, उसने क्या कहा शेड्यूल 1 ने कि जो अभी आप दाम फिक्स कर रहे हो, दे विल बी फ्रोजन फॉर अ टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. ये 3 साल कब से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ commencement. From the date of commencement of the act, that was in July 2013, precisely 5th July 2013. के 5 जुलाई 2013 से स्टार्ट करके 3 साल तक जो है इन प्राइजेस के साथ यू कैन नॉट change or you cannot alter them. They will be fixed for a period of 3 years from the date of commencement, that is 5th July 2013. But even after this 3-year term, or you can say 3 साल 2013 के बाद से 2016 जब 3 साल पूरे हो गए उसके बाद से भी this has not been revised. ठीक है, this is what the Niti is asking here, that since this legal binding upon you which you had कि आप 3 साल तक नहीं छेड़ सकते उन प्राइजेस को या रिवाइज नहीं कर सकते, बट नाउ दिस लीगल obligation or you can say this legal condition is no more in existence because these 3 years have already been completed. तो अब आपको शेड्यूल 1 जो है वो नहीं रोकता कि यू कैन स्टिल नॉट रिवाइज देम. ठीक है, बट इवन आफ्टर दी और यू कैन से स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया yet not revise the CIP, that is the central issue price. ठीक है, इसीलिए मैंने ये सेंट्रल इशू प्राइस पहले बता दिया था. दैट इज स्टिल द गवर्नमेंट हैज नेवर रिवाइज्ड इट. नाउ व्हाट इज द केस इन पॉइंट हेयर? यहां तक क्लियर है? फिर समझते हैं कि इसको रिवाइज कर कैसे सकते हैं. यस, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ. ठीक है, तो देखो ये बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में नीति आयोग का ये डिस्कशन पेपर जो है बात कर रहा है. एंड फॉर दिस रिविजन टू हैपन, और यू कैन से for revising these prices under the schedule 1, you will have to issue a notification or you'll have to amend the schedule 1. You'll have to amend schedule 1. क्योंकि आपने कानून में ही in the law itself, since you had provided for the prices and to revise them, although that legal clause of the prices being frozen for a period of 3 years is over now, but still if you want to revise the prices, then you will have to amend the first schedule for revising these prices. ठीक है, कि आपको इस शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा, तभी आप इन प्राइजेस को रिवाइज कर सकते हो. एंड यू विल हैव टू अमेंड का यहां पे क्या मतलब हुआ? दैट इज द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट.
or you can say the bill will have to be tabled in the parliament and it will have to be passed like it was passed in the year 2013, जो 2013 में अपने पार्लियामेंट के थ्रू पास करके बिल को इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया था. इन अ सिमिलर फैशन यू विल हैव टू अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल. रिया, लीगल टाइम जो है 3 साल तक तो ये कहा था कि आप बिल्कुल छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, लेकिन शेड्यूल में प्राइजेस तो फिक्स किए थे ना. अब उन प्राइजेस को आपने अगर चेंज करना है तो शेड्यूल 1 में भी तो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना. जो प्राइजेस हैं, जो प्राइजेस मेंशन किए गए हैं, दे आर मेंशनड इन द शेड्यूल 1. and if you want to change the prices then you'll have to amend or you'll have to change the schedule itself. तो शेड्यूल को चेंज कैसे करोगे? वो एक्ट का पार्ट है और एक्ट को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, सरकार अदरवाइज नहीं कर सकती. ठीक है, समझ रहे हो बात को कि पार्लियामेंट के थ्रू ही ये रास्ता होके जाएगा, अदरवाइज आप सरकार अपने आप थोड़ा ना उसको अमेंड कर सकती है. जो लॉ मेकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेजिस्लेचर की होती है. इट इज द लेजिस्लेचर विच कैन ब्रिंग इन. सर बट दे वर नॉट फिक्स फॉर द लाइफ टाइम, सो शुडंट दे रिवाइज डायरेक्टली? नो 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 नो, आप एग्जीक्यूटिव एक नोटिफिकेशन या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू चेंज नहीं कर सकते. यूल हैव टू गो थ्रू द पार्लियामेंट्री रूट इटसेल्फ. यूल नीड द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. दोनों हाउसेज जो हैं पार्लियामेंट के, वहां से आपको क्लियर करवा के ही आप जो है चेंज कर सकते हो. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. yes yes certainly it is an act passed by the legislature, that is the case in point. अच्छा, अब ये जो रिवाइजिंग की बात कर रहे हैं इसके लिए इंटरेस्टिंगली the economic survey 2020-2021, it has also recommended a revision in the CIP. It also recommends a revision in the CIP. अगर हम बात करें आपके इकोनॉमिक सर्वे की भी, तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी सिमिलर रिकमेंडेशन दी है कि CIP को रिवाइज करना चाहिए. ठीक है, however apart from this, another observation is that the revised prices, however you can write that अगर आप सेंट्रल इशू प्राइस को बढ़ा भी देते हो, दैट इज द पीपल विल हैव टू स्पेंड मोर मनी टू परचेज दीज फूड ग्रेन्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Even then also the revised prices must be less than the MSP. They must be less than the minimum support price. ठीक है, जो MSP आप वीट के लिए दे रहे हो, कोर्स ग्रेन्स के लिए दे रहे हो, that MSP should be greater than the revised price even if you go ahead and revise the prices. क्योंकि अल्टीमेटली जो है आप उसको रिड्यूस तो करने की स्कोप तो नहीं है, लेकिन आप उसको बढ़ाओगे ही ना. तो बढ़ाओगे, लेकिन उसमें एक चीज जो है जो रिकमेंड की गई है कि वो MSP से नीचे ही होनी चाहिए. ठीक है, यस यस, राइस ऑल्सो. सभी केसेस में किसी भी केस में MSP से ऊपर नहीं जा सकता रिवाइज प्राइस. या आप कह सकते हो ये रिकमेंडेशन है, लॉ में तो नहीं है, रिकमेंडेशन है. फाइन, हाँ जी, ये नोट कर लिए सभी लोगों ने. देन वी विल मूव टू द प्रपोजल्स बाय द नीति आयोग. सर कैन वी आल्सो प्लीज डिस्कस द अफगानिस्तान पॉलिटिकल इशू, तिब्बत? यस, दैट I think that Akash sir will take up the Afghan issue. I hope that is on the table for discussion. Ria, that is another issue
दैट रिमेन्स टू बी सीन। उसके ऊपर ऑलरेडी जो है अभी भी उसके ऊपर जो है there is still the protests are still continuing. What is the government going to do with it? We really cannot say at this point of time. MSP is minimum support price. अरे भाई MSP is minimum support price. जो हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। चलो, सो नाउ मूविंग टू द प्रपोजल बाय नीति आयोग। हाँ जी, अफगानिस्तान पोलिटिकल इशू, तिब्बत पार्लियामेंट, नेपाल। श्योर श्योर श्योर। चलो ठीक है, तो प्रपोजल बाय नीति आयोग। सो व्हाट नीति आयोग हैज सेड दैट द coverage on the national front, that is national rural coverage, certainly it has said that reduce the coverage, and in the reduction also on the national rural and the national urban, on both these fronts नीति ने क्या प्रपोज किया है कि नेशनल रूरल कवरेज एंड नेशनल अर्बन कवरेज जो है 75 से 60 रिड्यूस करो रूरल एरियाज में, ठीक है, फ्रॉम 75% reduce it to 60%, and for the urban areas reduce the coverage which is right now at 50% to 40%. नीति आयोग का कहना है कि पॉपुलेशन जो है बहुत चेंज हुई है, लोगों के अर्निंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं, लोगों का जो सेंसस पिछली बार जो हुआ था 2011 का, जिसके बेस पे आपने ये प्रोवाइड किया था 2013 में, इस कवरेज को अब यू वांट दे शुड बी रिड्यूस्ड, एंड फॉर दिस, फॉर रिडक्शन इन कवरेज दे विल हैव टू अमेंड। अब देखो यहां जो डाउट था एक बच्चे का कि क्यों इनको एक्ट अमेंड करना पड़ेगा या डायरेक्टली क्यों सरकार नोटिफाई नहीं कर सकती, तो देखो जो कवरेज है ये भी जो है सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सिंस इट वाज प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन 3 क्लॉज 2, ठीक है, सो दे विल हैव टू अमेंड द सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो भी चीज आपने लॉ के थ्रू प्रोवाइड की है, अगर आपने पार्लियामेंट के थ्रू बिल पास करके प्रोवाइड की है, उसको चेंज आप सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू ही कर सकते हो, ठीक है। मार्क इट एज अ रूल ऑफ थंब दैट if a provision has been provided for through a bill which has been passed by the parliament, that is, it is a statute, then it can only be altered or changed by again going through the parliament's process or the legislative process, and that is why they'll have to amend section 3(2) of National Food Security Act if they want to reduce the national coverage and the urban coverage from 75% to 60% and from 50% to 40% respectively, ठीक है। अभी करंटली जो है 75% रूरल पॉपुलेशन कवर करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दिस इज द current coverage, and this is what it proposes to reduce the coverage to, ठीक है। yes certainly चहक, देखो जो हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, देखो इस चीज को समझो कि ब्रॉड जो कानून बनता है, द फ्रेमवर्क और द कॉन्टूर्स ऑफ अ लॉ,
जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क बनता है या ढांचा बनता है और जो मेन प्रोविजंस होते हैं किसी भी कानून के, दे आर ब्रॉट थ्रू द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो हमारी संसद है विच इज द लॉ मेकिंग बॉडी, एंड देन उसके अंडर जो उसमें बायलॉज हैं, रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो जो हैं सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ला सकती है, या फिर जिसको आप कह देते हो सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फाइन, yes, certainly that is the role of the bureaucracy. यहाँ पे it is the role which you people will be playing when you become bureaucrats. Then you will be helping the ministers in this task of subordinated legislation or delegated legislation. वो सारा काम effectively bureaucracy ही करती है। ठीक है, खिनित देखो यहाँ पे जो बात है उस पे हम आने वाले हैं। जो आप कह रहे हो, नीति का मानना है, नीति आयोग का मानना है कि इन सालों में 2011 के बाद से 2020-21 जब हम इतने साल का समय तय कर चुके हैं, इसमें पॉपुलेशन जो है काफी चेंज हुई है, डेमोग्राफी चेंज हुई है इंडिया की, अर्निंग पैटर्न चेंज हुए हैं लोगों के, सभी लोग उतने अभी उस लेवल तक अभी प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स में नहीं फॉल करते, लेकिन फिर भी उनको बेनिफिट्स जो हैं एक्सटेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो this is still in the discussion stage में ही है। Let me remind you that nothing has been made official or any amendment has not been made in the law। पर नीति आयोग का ये मानना है कि इतनी जो सब्सिडी का बिल है उसको रिड्यूस करना चाहिए सरकार को। that much amount of subsidy which is going on the subsidized grains through the PDS system, that should be decreased। this is what the Niti Ayog's idea is behind this particular discussion। yes, census 2011 is being used। अगला सेंसस तो अभी कंडक्ट होना ही है, तो पिछला सेंसस ही है जो है उसी के डेटा के ऊपर ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप मेंशन कर लो। एक तो ये जो अमेंड करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज हैं, दे आर टू द ट्यून ऑफ 81 करोड़ पर्सन्स। 81 करोड़ बेनिफिशियरीज। ठीक है, अंडर योर National Food Security Act 2013, which is roughly what? This is roughly 2/3 of your population। एंड अगर जो ये फिगर्स हैं इसके हिसाब से भी नीति आयोग ने प्रोजेक्शन दी है कि अगर हम प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, ये नोट कर लिया सबने? आई होप दिस हैज बीन नोटेड। सो व्हाट द नीति हैज फर्दर सेड दैट the Niti says that if its proposals are given a go ahead, so what the Niti Ayog has said that if the proposed reduction is implemented, or you can say अब यहां पे बात करेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी विच नीति आयोग वांट्स टू सेव, और यू कैन से व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग दिस प्रपोजल, that if the Niti Ayog's proposed reduction in coverage is implemented, then it says that on the basis of projected
on the basis of देखो, क्योंकि सेंसस जो है हमारे पास 2011 का ही डेटा है, उसके बाद ऑफिशियली पॉपुलेशन पे सेंसस क्योंकि हुआ ही नहीं कंडक्ट, तो ये प्रोजेक्टेड फिगर्स ही हैं, या आप कह सकते हो एनालिसिस के बेसिस पे ही नीति ये बात कह रहा है दैट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो अभी हमने बात की 81 करोड़ बेनिफिशियरीज ऑफ द पीडीएस सिस्टम, दे विल बी रिड्यूस टू 71.6 करोड़। मतलब नीति का मानना यह है कि जो डेमोग्राफी में, पॉपुलेशन में, अर्निंग पैटर्न्स में लोगों के डेवलपिंग से या अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड स्टेटस में, या आप कह सकते हो रिलेटिवली प्रॉस्पेरस स्टेटस में जो चेंज है, उसके हिसाब से ये बेनिफिशियरीज रिड्यूस करके हमें इस लेवल तक लेके जाने चाहिए। इसीलिए हमने ये सारी डेटा एनालिसिस करके वी हैव कम टू दिस फिगर। हवा में कुछ नहीं किया है। जो वो रिडक्शन 75 से 60 और 50 से 40 की बात हो रही है इन दी रूरल पॉपुलेशन और इन दी रूरल कवरेज and in the urban coverage respectively, that has been done with respect to the data that has been analyzed, and on the basis of that analysis the projected population, this is for the year 2020, ठीक है, जो ये प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, दिस इज फॉर द ईयर 2020, the number of beneficiaries must be reduced to 71.6 crore, और अदरवाइज इन्होंने कहा है इफ दिस इज नॉट डन एल्स, again on the basis of projected population for the year 2020, the number of beneficiaries will go up to 89 or 90 crore. के beneficiaries जो हैं they will shoot up to this particular point, and the central government, it will have to go for an additional subsidy, an additional subsidy देखो सारी जो बात जाके फंस रही है वो सिर्फ बेनिफिशियरीज की बात नहीं है। बात यह है नीति आयोग और बाकी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस, साथ में फूड मिनिस्ट्री जो कह रहे हैं कि जो लोग वाकई में ही जिनको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उन्हीं तक सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स पहुंचाना जो है, दैट इज द इंटेंट बिहाइंड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन अगर इतने 9-10 सालों के स्पैन में पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, ये सारे चेंज हुए हैं, तो सर्टेनली एक्ट भी तो चेंज करोगे। प्रोविजंस जो हैं वो 2011 की पॉपुलेशन के डेटा के हिसाब से कैसे चल सकते हैं आज की डेट में, जब इतने चेंजेस आ चुके हैं। एम आई राइट और नॉट? सी, I am not against the concept of subsidized food grains being provided to the needy or to the downtrodden section of the society. But at the same time, you'll have to cater the amount of money, क्योंकि ultimately it is the taxpayers' money only. Am I right or not? देखो, ये सरकार अपनी जेब से पैसा तो निकाल के दे नहीं रही है, ये taxpayers' money ही है which is diverted to different schemes. And that taxpayers money is what? That is what you and I pay as taxes to the government, and certainly हमारी भी hard earned money ही है। You are not printing money at home and giving it to the government as taxes. Fine. So that is the basic idea underlying this concept, and it will amount to additional subsidy, or you can say the central government will be able to save around rupees 47-48,000 crores. This is an estimated figure.
अगर तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये प्रपोज रिडक्शन फॉलो करते हो, देन यू विल बी एबल टू save this much amount of money. If you follow this proposed reduction, then you will be able to save approximately 47,000 crore rupees. Otherwise, you'll have to provide this as an additional subsidy. नहीं, ये देखो, जो एडिशनल सब्सिडी इनको बचेगी अगर ये फॉलो करते हैं नीति के प्रपोजल को, तो दैट विल बी रफली अराउंड 47,000 crore द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एबल टू सेव. ठीक है. अदरवाइज this subsidy will not be saved by the government, or you can say this will again go as the subsidies. Fine. हाँ जी, ये क्लियर है सभी लोगों को? This is the basic idea behind the proposal which Niti Aayog has floated. Is it clear to everybody? चलो ठीक है. देखो, अल्टीमेटली किसी भी वेलफेयर स्टेट, अगर हम बात करें इंडियन डेमोक्रेसी की या इंडियन स्टेट की, so what are we? We essentially the constitutional fathers, or you can say the constitutional forefathers and foremothers, to be general neutral. I will say that they envisaged, उन्होंने कैसा भारत सोचा था? उन्होंने एक ऐसा भारत सोचा था जहां पे सभी जो समाज के तबके हैं उनके लिए सरकार जो है उनके भले के लिए काम करेगी, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी. ठीक है कि नहीं? यही हमने एनविसाज किया था ना, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का जुल्म सहा इतने सेंचुरीज तक, इतने हमने साल ब्रिटिशर्स की जो भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी वो सारी सहन करी. सो उसके बाद जब हमने आजादी ली और अपना संविधान बनाया, तो उसके पीछे यही एक पर्टिकुलर दिमाग में सोच थी कि अपनी जो पॉपुलेशन है जिसने इतनी एक्सप्लॉयटेशन सफर की है एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, वी शुड वर्क फॉर देयर वेलफेयर. And that is why such policies are framed in the first place. That is, the concept of Antyodaya was also talked about Mahatma Gandhi. अगर हम अंत्योदय की या आप कह सकते हो अंत्योदय सर्वोदय के, even the last man who standing in the queue should be served by the state. That is the concept of अंत्योदय, के आखिरी व्यक्ति भी जो कतार में खड़ा है उसके भले के लिए भी सरकार काम करेगी. ठीक है. तो यही रीजन है कि ऐसी पॉलिसीज को लेके आया जाए. लेकिन आप एक चीज देखो कि इतने सालों में जब बहुत सारे समाज के जो तबके हैं, मेनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे हैव इवॉल्व्ड, दे हैव प्रॉस्पर्ड विद टाइम, दे हैव अचीव्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन देयर लाइव्स. सो द स्टेट स्टिल is providing, if the state is still providing for many subsidized things to those people, then certainly that is at the cost of other sections of the society whose taxpayers money is being used. Yes, जैस्मिन, जो आप बात कह रहे हो कि ये कुछ स्टेट्स ने सर्टेनली इसको क्रिटिसाइज किया है, स्टेट्स के इसके ऊपर कमेंट्स जो आए हैं वो यही आए हैं कि रादर देन गोइंग फॉर कर्टेलिंग, you should rather enhance or expand the coverage. जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कवरेज को लिमिट करने की बात हो रही है, ये आपने अच्छा पॉइंट मेंशन किया है. इसमें दो एंगल्स मेंशन करो. द अदर व्यू पॉइंट, you can quote the names of people such as John Drays, also a noted intellectual by the name of John Drays. I'll not mention it on the board, but you can quote it, you can write it, that John Drays has also said that instead of curtailing, the state should expand the coverage of the National Food Security Act. So the other viewpoint is that the state or the government
must expand the coverage instead of curtailing or trimming. Instead of curtailing or pruning. के बजाय जो है आप उसको कट कर रहे हो कवरेज को, वी से दैट यू गो इन फॉर एक्सपैंडिंग दैट कवरेज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. दिस इज व्हाट वी फील शुड बी द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, एंड दिस हैज बीन सेड बाय नोटेड फूड rights activist. If you don't want to mention the name, if you don't want to mention any particular name, then you can simply write that noted right to food activists. These right to food activists, they advocate for the expansion in the coverage and not the pruning of the National Food Security Act and the coverage. ठीक है, और दूसरा ये स्टेट का आर्ग्यूमेंट ही अपने एडवांटेज के लिए भी यूज कर सकते हैं. यहां पे हम जो सरकार का या नीति आयोग का आर्ग्यूमेंट है, दैट वी कैन यूज टू फ्रॉम द अदर व्यू पॉइंट ऑल्सो, दैट व्हाट इज द डेटा विच यू आर साइटिंग, कि भाई सेंसस 2011 का जो डेटा है, certainly this census 2011 data is old, but the new data is yet to be released or it is yet to be collected in the first place. तो आप कैसे कह रहे हो कि भाई curtail करना जो है, that is going to be good enough and not expansion? How are you so sure about that कि 2011 के सेंसस के बाद तो सेंसस अभी हुआ ही नहीं है? Then how are you saying that this is the right step? ये चीज क्लियर है? आप इस पॉइंट को एज एन ऑल्टर पॉइंट भी यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस. जो ये दो चीजें हमने बात करी कि एक तो डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसको आप एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर व्हाट योर रिकमेंडेशंस आर, यू आर यूजिंग एज अ आर्ग्यूमेंट फॉर सपोर्ट ऑफ दैट. सो इट कैन बी यूज्ड अदरवाइज ऑल्सो. चलो ठीक है. So now moving to the next topic, that is with respect to the INSTC and Chabahar port. So recently India has advocated that the Chabahar port in Iran should be included in the international north-south corridor, ताकि जो है complete advantage of Chabahar port can be leveraged. Fine. Although ये इंडिया का पहले भी स्टांस रहा है, but why we are discussing it now that India wants the Chabahar port to be included in the international north south transport corridor. ठीक है, that is the INSTC. And with respect to this particular demand of India, this is a constant stand which India has maintained कि चबाहर पोर्ट को इंक्लूड किया जाए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में.
हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक और कंटेक्स्ट में डिस्कस किया था वीकली करंट अफेयर्स की पिछली, आई थिंक द लास्ट or the last to last class we discussed the role of INSTC. Can anybody mention? Yes, exactly, Isha. Great that you guys remember the Arctic region. हमने तब कहा था that India wants to leverage the INSTC for exploring the Arctic region as well. Yes, certainly. So this is the issue here, and the international north-south transport corridor. Before moving on to yes, where does, okay, I am coming to what is INSTC. INSTC is the acronym stands for International North-South Transport Corridor. And what exactly is International North-South Transport Corridor? Then it is a multimodal network comprising of rail, road, and ship. All these linkages एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें multiple modes of transportation are there, that is rail, road and ship, through which we are linking the Indian Ocean all the way to the Russian city of St. Petersburg. ठीक है, जो INSTC है, it was established in which year? INSTC जो है कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था, ये तो अब तो इस बारे में हम बात पहले कर भी चुके हैं, तो INSTC पता तो होना चाहिए आप लोगों को. When was the INSTC established? इसके आगे what should I write? 2000, 2020, 2015, 2010, 2005, 2000 or even before? Any guess? 2007. Okay. वाइल्ड गैस ही कर दो यार, बिल्कुल आप लोग तो पार्टिसिपेट जब नहीं करते ना, तो देन इट इज वेरी सैडनिंग. नो, इट वाज ओके, ठीक है. कुछ लोग तो 2009, 7. It was established in the year 2000. It was established in the year 2000, and this is of 7200 किलोमीटर. ठीक है, जो INSTC पूछा था आप लोगों ने. It was established in 2000 by India, Russia and Iran. ये आप लिख सकते हो ओरिजिनली, ठीक है, बिकॉज नाउ अदर मेंबर्स हैव आल्सो बीन एडेड. Originally, it was established by India, Russia, and Iran. And since I can see that many people are not much aware about INSTC, so we will discuss or we will list the other members also which have been later added. हाँ जी, ये नोट कर लिया. Have you noted this? Okay. So we will just enlist the so after the inception by the three countries, that is India, Russia, and Iran, the INSTC was expanded, and now it includes, I'll just write down the members along with me. Azerbaijan, Armenia. These are the members after expansion. ठीक है, Azerbaijan, Armenia, then Belarus, Bulgaria,
just mention along with Bulgaria that Bulgaria is not a full-time member, it is an observer. ठीक है. After Belarus and Bulgaria, mention India and Iran, the initial or the founding members. Then we have Kazakhstan, Kyrgyzstan. Then we have Tajikistan and Turkey. यहां पे बुल्गारिया को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो फुल टाइम मेंबर्स हैं. बुल्गारिया इज एन ऑब्जर्वर स्टेट. फाइन. ताजिकिस्तान, टर्की एंड देन ओमान, रशिया, सीरिया, यूक्रेन. ओमान, रशिया, सीरिया एंड यूक्रेन. ठीक है. यस यस सर्टेनली खिनित. ताजिकिस्तान, ओमान, सीरिया. So essentially the member will allow some privilege and access to right. See this particular route, all these countries, इसकी लिंकेज लिख लेते हैं, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा. देखो INSTC की जो बात कर रहे हैं, it starts the linkages right from your Indian Ocean to Persian Gulf. I'm listing the bodies which are linked. The Indian Ocean, the Persian Gulf, then after the Persian Gulf, it is the Caspian Sea. Then it is the Russian city of St. Petersburg. ऑर्डर नेसेसरली ये नहीं हो सकता, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कौन कौन सी जो हैं लिंकेजेस हैं, द ओशंस, द वाटर बॉडीज एंड द सिटीज आल्सो. इसके बाद ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया जा रहा है एंड इट इज लिंकिंग द नॉर्दर्न यूरोप एज वेल. This is the linkage which the INSTC is providing. हाँ जी, ये क्लियर है? Is it clear to everybody now, the INSTC which we talked about? Because I believe many people were not aware about INSTC. What is the coverage and what are the participants? चलो ठीक है, great. So now coming to the particular demand which India has raised, जो भारत ने अभी बात कही है. So particularly, sure, I'll do that. What particularly India has demanded, दो फ्रंट्स पे इंडिया ने डिमांड रखी है अपनी. एक तो फ्रंट है जो हम बात कर रहे हैं चबाहर पोर्ट का, और दूसरा फ्रंट है दैट इंडिया वांट्स a land route via Kabul and Tashkent to be made a part of INST's ईस्टर्न कॉरिडोर. हाँ जी, ये नोट कर लिया आप लोगों ने तो मुझे बता दो. ठीक है, फाइन. So the demand which India has put forth is that first we'll discuss about the Chabahar port only, or rather first we'll discuss about the Kabul route. So India has proposed that we should include a land route via Kabul and Tashkent.
This is obviously Afghanistan. Where is ताशकंद? ताशकंद बहुत फेमस भी है, एक और अपनी एक और चीज के लिए ताशकंद जाना जाता है, किस लिए? वेयर इज ताशकंद? यस, उज्बेकिस्तान, बिल्कुल। एंड व्हाई, व्हाट इज द अदर हिस्टोरिकल रीजन दैट ताशकंद इज नोन फॉर? इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। यस, बिल्कुल, certainly, certainly, Dhruv, that is the point which I was talking about. We have the Tashkent files also with the name of the, yes, exactly, exactly, Tashkent files, जो अभी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं by and large there is no official version about the death of honorable लाल बहादुर शास्त्री जी। yes, yes, certainly, बिल्कुल। कौन सा वॉर था जिस वॉर की ट्रीटी कंक्लूड करने के लिए शास्त्री जी हैड गॉन टू ताशकंद? हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी, आई होप। यस, दैट वाज द ईयर, दैट वाज द वॉर, बिल्कुल, द इंडो पाक वॉर, व्हेन वी हैड इन्वेडेड पाकिस्तान एंड पाकिस्तान वाज ब्रॉट ऑन इट्स नीज एंड दे अर्ज्ड द रशियंस टू बिकम अ मीडिएटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस वक्त जो है ताशकंद सोवियत यूनियन का पार्ट था। यस, यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल। And that was the most unfortunate moment, you can say, when he was assassinated. Fine. So coming back to the topic, so the first proposal which India has put forth, that we want a land route to be included via Kabul and Tashkent in the international north-south transport corridor, or rather to be specific, that is the eastern corridor of INSTC. It will be the eastern corridor of INSTC, that is the International North-South Transport Corridor. Fine. So this is the first proposal. And the second proposal is with respect to which we had already talked about briefly, that is the inclusion of Chabahar Port. अब ऐसा नहीं है कि रात को सपना आया डिप्लोमैट्स को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में या डॉक्टर जयशंकर को या प्राइम मिनिस्टर को कि आज चलो उठ के बात बोलते हैं कि चबाहर को इंक्लूड कर लो। बहुत सारे ग्लोबल अफेयर्स में और भी डेवलपमेंट्स होती हैं जिसको तवज्जो देके बहुत सारी चीजें जो हैं वो कब करनी है उसका वो डिसाइड होता है। तो इसका बैकड्रॉप एक ये भी है दैट विद द कमिंग ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज द बाइडेन प्रेसिडेंसी, सो एक उम्मीद ये लगाई जा रही है दैट इट इज वेरी मच प्रोबेबल दैट द JCPOA और द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो न्यूक्लियर डील है विद ईरान, which was from which the United States had withdrawn under the Trump presidency, that will be revived, or the Americans will again want to persuade certain diplomacy and lift certain sanctions from the Iranians, जो हमारे फेवर में ही जाएगी बात, क्योंकि हमारा देखो एक तो तेल वाला मसला भी है कि हम ईरान से सीधा इंडियन रूपी में वी यूज्ड टू परचेज ऑयल व्हिच वाज ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, लवेबल ट्रंप चाचा। ठीक है, तो अब क्योंकि बाइडेन साहब आ गए हैं तो हमें उम्मीद है कि वो वापस तेल वाला जो हमारा मसला है, क्योंकि वैसे भी देख लो दाम बढ़ रहे हैं, और अभी हमने डिस्कस पिछले हफ्ते भी किया था कि इंडिया, और यू कैन से द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड इट्स ministries to look for diversifying the source of import of crude from the western Asian nations, क्योंकि ओपेक ने अभी भी ये कहा है कि हम तो भैया प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, हमें अभी भी दाम और बढ़ाने हैं, हमें अपना प्रॉफिट जो पीछे सारा खड्डे में गया कोविड के टाइम में वो रिकवर करना है, तो इसलिए प्रोडक्शन अभी तो हम उतनी ही रखेंगे जो लेवल्स हमने कट किए थे, ताकि और प्राइसेस अभी स्टेबलाइज हों। दिस इज व्हाट देयर व्यू पॉइंट इज, बट सर्टेनली वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट्स, and our interests lie in the revival of the JCPOA and the lifting of sanctions from Iran, so that we can revive or we can again continue with the import of crude oil from Iran. ठीक है, हाँ जी, वो चीज क्लियर है ना? आई होप दैट इज क्लियर। यस रक्षंदा, वेनेजुएला वाला जो ऑप्शन है वो सही है आपका, ठीक है, दैट पॉइंट इज सर्टेनली वैलिड। सो लेट्स जस्ट फिनिश इट, दैट चबाहर पोर्ट, इसके बारे में जो बात है, टू बी इंक्लूडेड इन द INSTC or to be added
टू INSTC, एंड इसके पीछे रीजन जो है मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर लिए। एक और जो रीजन है वो ये भी है, देखो सिर्फ वहां पे डिप्लोमेटिक रीजंस नहीं है, इसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे, सो द चबाहर पोर्ट इट कैन हैंडल कार्गो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख टन्स। जो दूसरा पोर्ट है दैट इज दी बंदर अब्बास पोर्ट, वो इससे ज्यादा के इस अमाउंट के टनेज के कार्गो हैंडल नहीं कर सकता। तो उसलिए भी जरूरी है कि अगर आप INSTC में इसको इंटीग्रेट कर लेते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दी कार्गो शिपमेंट्स एज वेल। फाइन, इज दैट क्लियर? जस्ट मेंशन दैट अनलाइक दी बंदर अब्बास पोर्ट। और इसके बाद भी अगर एक थर्ड एंगल मेंशन करना चाहते हो तो देन यू कैन से दैट we can also potentially counter, or you can potentially we can balance the OBOR. One belt one road initiative or the Belt and Road Initiative BRI। क्योंकि यहां पे देखो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, एंड थ्रू दैट रूट चाइना वांट्स टू बिल्ड दोज इकोनॉमिक लिंकेजेस। और अगर आपको काउंटर करना है उस चीज को, या अगर मान लो काउंटर नहीं करना, आप बैलेंस करना, इफ यू वांट टू बी न्यूट्रल इन टर्मिनोलॉजी, देन इफ यू वांट टू बैलेंस इट आउट, then you can do so with adding the Chabahar port, which is of much strategic importance for India। ठीक है, चबाहर पोर्ट से जो है महज 70 किलोमीटर की दूरी है ग्वादार पोर्ट की, जो चाइना ने डेवलप किया है पाकिस्तान में। Are you getting my point? So that is also one interest which we have। ठीक है, तो ये आप this you can list as the advantages। This is the demand for a land route via Kabul and Tashkent, and the another demand that is with respect to Chabahar, उसमें ये सारे जो हैं will be the benefits। Sir, why it is demanding this? What's benefit of India? अरे यही तो बात कर रहे थे। देखो रिचा, जो हम बात कर रहे हैं चबाहर को इंक्लूड करने की, तो पहली चीज तो ये है दैट इंडिया हैज अ स्टेक इन इट। इंडिया हैज असिस्टेड ईरान इन डेवलपिंग दिस चबाहर पोर्ट। और हम अगर बाईपास करना चाहते हैं अपने ट्रेड रूट को फ्रॉम Pakistan and we want directly to go to Afghanistan, then this is the only route we have, or this is the only alternative we have। That is the main advantage कि आप जो है पाकिस्तान is constantly a nuisance। हम कितने टाइम से, अगर जब रिसेंट हिस्ट्री को छोड़ भी दो, अगर कुछ 3-4 साल पहले भी चले जाओ, या बात कर लो उस किसी टाइम की, जो हमारा भारत पाक जो है वो एक मित्र देश थे या भाई भाई की तरह रह रहे थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने कभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया इंडिया को थ्रू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। एंड वी सर्टेनली हैव इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। हमारा बहुत पैसा लगा हुआ है, हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वहां पे, और अफगानिस्तान एक एलाय है इंडिया का। तो अगर पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्टली आपको अफगानिस्तान जाना है, वहां ट्रेड करना है, वहां अपना सामान पहुंचाना है, तो ये चबाहर पोर्ट जो है इट इज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेट रूट। ठीक है, देखो अभी तो ऐसा है ना कि एयर रूट भी आप फॉलो करते हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन भी करते हो, लेकिन दिस विल बी एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव विच विल बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। फाइन, और एक चीज इसमें ऐड कर लो यहीं पे, विल कंक्लूड इट हियर ओनली। Just add one more thing that India is also looking at stabilizing Afghanistan। जो ये वाला पॉइंट है ना काबुल वाला, इसके थ्रू देखो, क्योंकि since America is virtual now, Americans are now withdrawing, or they have, rather you can say Trump has mostly withdrawn from Afghanistan, so India, a stable Afghanistan is in the interest of the region and of India दोनों के context में, that is stabilizing अफगानिस्तान। ठीक है, हाँ जी, ये चीज क्लियर है, प्लीज मुझे कंफर्म कर दो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग फॉर अ वेरी स्पेशल मोमेंट। वी विल वेलकम आवर बिलवड आकाश सर
who is back directly from Memphis via New York. He has met both. He had bid farewell to Trump and he had extended welcome to Biden also on behalf of all of us Indians and future bureaucrats of the country, which you of course are. ठीक है? So I'll just turn the slide. It is going to be a fresh page for our respected Akash sir. So I request you all to please welcome Akash sir, who's back directly from Memphis via New York. So please, Akash sir. Thank you, Piyush, and thank you for all the warm words that you have given here. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon. All right, so it's a coming back to this class. It's great. Current affairs class is something that gives me a lot of room to flex my arms. चीजें नहीं पता होती हैं तो नई चीजें सीखने को मिलती हैं और चीजें पता होती हैं तो नए नए इनसाइट्स देने को मिलता है करंट अफेयर्स क्लास में. So it is something really good, right? All right, so I hope you all are doing great. Okay, so we'll continue from where Piyush left. So like Piyush was telling you about Iran and Afghanistan. ऑलराइट, इसके ऊपर एक आइनेस्टिसी के ऊपर काफी पहले एक लेक्चर लिया था, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैं पीयूष की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा सप्लीमेंट करता हूं. डेवलपमेंट ऑफ शाबाहार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. यू नो व्हाई? बिकॉज if you look at the Persian Gulf, all right, so if this is your Arabian Peninsula, this is Iran, all right, फिर इधर Pakistan, and this is India. So if you look at this, Shabahar is located here. It is the Makran coast. Shabahar is located at Makran coast. Okay. From Shabahar, here is Gwadar. So this Shabahar for India, it is having a dual purpose. One, we will be able to keep a check upon the Gwadar, and this Gwadar has been under Chinese control, though it is a Pakistani port, but Chinese control over Gwadar. Then what is happening through Mumbai and various other ports of India, you can then make use of Shabahar, then Shabahar to Delaram, Shabahar to there's this cross trans-Iran railway corridor that is being constructed. Then till Delaram, there will be a railway track along with the road network. Delaram to Herat and the Garland Highway of Afghanistan. This is how we will be linked economically to Afghanistan, bypassing Pakistan through Shabahar. All right, so yeah, diagrammatic representation is really very good. So you go for making these kind of diagrams in your paper. Now coming to another point that Piyush just made, that if you look at all other ports of Iran, like for example, there is Bandar Khomeini, there is Bandar Abbas, all right, there is Bandar Lenge, all right, Bandar basically means port, all right. So all these ports are located inside the Persian Gulf, and these ports are shallow ports. These are shallow water ports, whereas Shabahar, it is actually a deep water port. So what right now, what Iran is doing, Iran is getting all its products being unloaded at the Oman port, and from Oman, using small ferries, it is distributed across Iran. So if India is going to develop Shabahar there, it will be a win-win situation for both India as well as Iran. For Iran, Iran will get its first deep sea water port, that is in the form of Shabahar, whereas what is going to happen? India is going to get access into Afghanistan, and India will get a strategic point of control for Gwadar as well. All right. And then another very important point, Shabahar is going to help India to break the Chinese string of pearls. Chinese string of pearls. So China ने Colombo port ले रखा है, Sittwe port ले रखा है. All right. Sittwe, Colombo, Gwadar, Kenya,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इस तरीके से चाइना इंडिया को एनसर्कल कर रहा है, तो इंडिया हैज टू ब्रेक दैट एनसर्कलमेंट. So one of the breaking point will be when India will take up Chabahar and connect it with its ports. All right, it is a quite significant insight. और दूसरा, इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को ब्रेक करने के लिए जितने भी छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ भी अपने लिंक्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू कट द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. प्रोजेक्ट मौसम वाज लॉन्च्ड. ऑलराइट, ये सब, like for example, whatever is happening in current affairs, it is not an isolated piece. ये connected piece होता है. करंट अफेयर से समथिंग दैट इज कनेक्टेड. अभी ये शाबाह और ये ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये 2016-17 में पढ़ाया होगा मैंने, बट आज की डेट में ये और इंपॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज अगेन there is a change in the presidency in the United States which turns out to be a slightly liberal, and then it might be possible that Iran must be given some concessions and India can then trade again with Iran, maybe in terms of oil and then development of Chabahar. You know, Iran became so much annoyed with India last year that they actually told India कि कोई बात नहीं participate करना, then go to hell, we will develop Chabahar. Alright, so geopolitics जैसे जैसे बदलता है तो पुरानी चीजें वापस से re-emerge करती हैं. Okay, and peaceful Afghanistan is in very important interest of India because India is going to get access through peaceful Afghanistan, peaceful Iran into Central Asia, and Central Asia is a very resource rich area and a potential market in future if India want to exploit the economic benefits of that region. All right, chaliye. I was actually thinking about teaching you people right now a concept which was there in news that's called climate justice. जिसके ऊपर there's a quite possibility that you might be asked a question in your mains exam, but I think that I will put that topic on hold as of now. Since you people are already talking about Afghanistan, so there was a newspaper article that was related to Afghan peace process, Afghanistan peace process in light of the change of presidency in the United States. In the United States, there is a change in the presidency. The change in presidency can be seen where Trump is being replaced by Joe Biden. All right, Joe Biden, whatever you want to call him. Now, so the topic that we can take up today first is Afghan peace process. Afghan peace process. All right, there's a potential question that might come because this thing that is going on right now, it is going to have some tremendous fallouts, and this we have to discuss. एक सेकंड मेरे को गेट खोलने दो, it's a bit suffocating. Yeah. How many of you don't know what is the Afghan problem? ये 2001 का इंसिडेंट तो सबको पता होगा. 2001 से पहले किसको इसको नहीं पता? How many of you don't know what is this Afghan issue before 2001? Are you all comfortable? Okay. US invasion of Afghan तो 2001 की बात है, बात उससे पहले की है. ये जो जितना भी कचरा अभी मचा हुआ है ना अफगानिस्तान में, ऑलराइट, जो अफगानिस्तान में कचरा मचा हुआ है उसके पीछे ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल की ताकतों का हाथ है. 2001 तो इट्स ऑलमोस्ट हाफ वे. थिंग्स स्टार्टेड इवन बिफोर दैट. चलो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बनवाऊंगा. सो टाइमलाइन भी बना लेना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग मेनी क्वेश्चन, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो करंट हो, यू कैन वेरी इजीली अटेम्प्ट इट. तो बात है उन दिनों की. किन दिनों की? उन दिनों की. ये चहक अभी बहुत ही रिसेंट की बात कर रहे हो आप, मैं आपको लेकर जा रहा हूं कोल्ड वॉर के टाइम. तो बात है उन दिनों की, कोल्ड वॉर के दिनों की. कोल्ड वॉर के टाइम अफगानिस्तान में 1978 में देयर वाज अ प्रेसिडेंट दैट वाज गोइंग, देयर वाज अ प्रेसिडेंट देयर एंड his name was President Daud Khan. Afghan had a elected President Daud Khan. Now this president had a stable government in Afghanistan, let us call relatively stable. ठीक है, stable means relatively stable. Basically, Afghanistan is a graveyard of civilization. तो we do not know वहाँ पे कितनी stability रही, कभी नहीं रही, लेकिन relatively it was a stable time. So बात कब की है? 1978 की. There was a Russia supported party. All right,
there was a Russian support to a political party, and the name of the political party was People's Democratic Party. It was People's Democratic Party. ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसने क्या किया, इसने कू कर दिया, COUP, कू होता है तख्ता पलट. सो दाऊद खान को, जो कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, विदाउट इलेक्शंस उसको टॉपल कर दिया. किसकी मदद से? रशिया की सपोर्ट से. किसने? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने. अब कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर वाज अ वॉर ऑफ सुप्रीमेसी between two supreme powers of that time. War of supremacy between two supreme powers of that time. One was USSR, that is Russia, Soviet, and second was USA. Second was USA. So अब रशिया आ गया अफगानिस्तान में, और ये दोनों कंट्री अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे. यूएसएसआर वांटेड टू एक्सपेंड इट्स ओन इन्फ्लुएंस एंड रशिया वांटेड टू एक्सपेंड इट्स ओन इन्फ्लुएंस. यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती थी, यूएस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था. सो व्हाट हैपेंड? यूएसएसआर एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान. यूएसए ने मुजाहिदीनों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. चाइना, यूके, Pakistan, USA, they started countering introduction of Russia in Afghanistan, and they started funding Mujahideen. They started funding Mujahideen, or the rebel. Against whom? Rebel against the Russian People's Democratic Party. So when people revolted against, the common people, yeah, let's call them Mujahideen. When Mujahideens, they fought militarily against the People's Democratic Party, Russia invaded. Russia militarily invaded in Afghanistan. This was Russian invasion of Afghanistan, 1979. Mujahideens are coming up. Mujahideens include students, mostly belonging to the Pashtun region of Afghanistan. All right? जो आपके students थे, Mujahideens, they were mostly the students, and these students were from the Pashtun region of Afghanistan. Can you tell me what you call in Afghan language or in Arabic? What is students? Students are called Talib. And from here emerged what is known as Taliban. This is what is known as Taliban. So, in Afghanistan, when in 1979 Russia invaded, so Daud Khan was toppled, and then in support of Daud Khan, the common people were turned into Mujahideens by China, UK, Pakistan, USA, as well as Iran. Okay, and thank you. And Russian military came in. अब बात चल रही है मुजाहिदीन वर्सेस रशियन आर्मी. कम से कम 9-10 साल ये वॉर चली. This thing kept on going for around 10 years. 10 years. And finally, in February 1989, I don't remember the exact date, शायद 15 फरवरी है. In February 1989, Russian forces or Soviet forces, all right, Soviet Russian forces, they decided to recall their troops. Russian forces ने अपने troops वापस से recall कर लिया. ठीक है, clear है? So this is from 1979 till 1989 there was Russian military presence there, and in 1989 Russian military has actually called its troop back. वैसे just for your understanding, just for the sake of your prelims examination, they might ask you the event that resulted into incursion of, or that resulted into introduction of Russian military into Afghanistan, that is known as
सावर रिवोल्यूशन, SAUR, भैया इसको अप्रैल रिवोल्यूशन भी कहते हैं, रिमेंबर दिस। ऑलराइट, प्रीलिम्स में आ सकता है, और खास करके आप जब यूपीएससी का पेपर इस साल आपने देख लिया, उसके बाद तो you should be quite aware about learning each and everything that is possible. All right, so Savar revolution of 1978 resulted into dethroning of Daud Khan and coming of the military of USSR into Soviet. And now for 10 years, the Mujahideens, which are actually the students, Talibs belonging to the Pashtun community, who were given support by USA, Russia, Pakistan, China, Iran, all these groups then started fighting the Russian army. यहां तक क्लियर है सब? Is this clear to everyone? Perfect. ठीक है. All right. So in 1989, USSR forces withdrew. They left Afghanistan. तो याद रखना कि जब भी, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी इसका देखो, जिसने स्नैपशॉट नहीं लिया फटाक से ये स्नैपशॉट ले लो. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सिटीजन चाइना विद रशिया अब होगी, उस टाइम नहीं था. रिया उस टाइम नहीं था, not at that time. All right, this is first. This is the second slide. आफ्टर दिस आपको जो भी आर्टिकल आएगा तालिबान या फिर अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पे, यू विल नेवर बी फीलिंग अनकंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर. ऑलराइट, ये हो गया. ध्रुव डन. चले आगे. स्नैपशॉट ले लिया करो अगर नहीं बना पा रहे हो, ठीक है ना. वैसे बनाओ, हाथ से बनाओ, वो ज्यादा बढ़िया है. ऑलराइट, लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो टेक अ स्नैपशॉट, कोई इशू नहीं है. सो इन 1989 यूएसएसआर फोर्सेस लेफ्ट अफगानिस्तान. रिमेंबर, जब भी किसी रीजन से कोई डोमिनेंट फोर्स निकलती है, whenever any dominant force leave a particular region, it creates something known as power vacuum. It is called power vacuum. ये एक हैबिट बनाओ, अपने आंसर में थोड़े से हैवी वर्ड्स डालो, खास करके आईआर के आंसर्स में. जब आप अपने आंसर्स में थोड़े हैवी वर्ड यूज करते हो ना, जैसे पावर वैक्यूम, जीरो सम गेम, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन कि आपने काफी अच्छे तरीके से अपना होमवर्क करके आए हो आप. सो when the USSR forces left Afghanistan, that was a dominant force that left, a power vacuum was created such that in 1989 different forces that were present in, different groups that were present in Afghanistan, they wanted to capture the power. They wanted to capture the power. अब जब पावर का बंदरबाट चल रहा है और डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो पावर को एब्जॉर्ब करना चाहेंगे, तो आपस में लड़ाई होगी. जब पूरा देश लड़ाई में झुक जाता है, जिसमें हर सोसाइटी का हर हिस्सा लड़ाई कर रहा होता है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट सिचुएशन? दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर. अफगानिस्तान एंटर्ड इनटू अ सिविल वॉर इन द ending years of 1980s, such that this civil war carried on for 5-6 years, and finally among the various factions that were fighting, in 1996 Taliban became victorious. Taliban victorious बनके emerge हुआ, such that from 1996 Taliban started ruling almost 3/4 of Afghanistan. Almost 3/4 of Afghanistan was under the direct control of Taliban, and Taliban government was gradually getting legitimacy. That is, people started accepting that yes, Taliban government is legitimate government. Is this clear? ठीक है. Now, और ये तालिबान किसने, so do you all agree that Taliban was largely created by support of the United States against the Russian army in Afghanistan? बिल्कुल ठीक है. चले आगे. स्नैपशॉट ले लिया? All right, good. Now what happened that
Taliban ruled from 1996 till 2001, and in the meantime they shifted their capital to Kandahar. Prelims information that under the Taliban rule in Afghanistan, what was the capital? The capital was Kandahar. कुछ याद आ रहा है? Kandahar. Anything clicking you? Indian Airlines. Yes, Indian Airlines. I don't remember the name of the. I don't remember the number, और वो relevant भी नहीं है. Indian Airlines flight from Kathmandu to New Delhi was hijacked and taken to Kandahar. IC 18484. All right, IC 84. ठीक है. So IC 84 was hijacked and taken to Kandahar, और उस time तालिबान के कंट्रोल में ही था Kandahar. So this Taliban government was accused largely for support to Al Qaeda, and Al Qaeda was a militant organization. Al Qaeda was a militant organization. It is a militant organization, and Taliban, after coming into power in Afghanistan, it went for strict implementation of Shariat, which is the Islamic law. So शरीयत को तालिबान ने बहुत ही स्ट्रिक्टली अफगानिस्तान पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, एंड तालिबान हैड सम गुड टाइज विद अल कायदा. अल कायदा ने 2001 में धूम मचा दी. 9/11 attacks on, all right, 11 September attacks on the World Trade Centers in America, on USA. This resulted into the United States and allies to launch a collective offensive against Al Qaeda. Against Al Qaeda. Remember, I am using the word Al Qaeda right now, because the United States was of the impression that Al Qaeda and Taliban were having linkage. United States said that you should break all your relation. ध्रुव, अल कायदा का ओरिजिन कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई विल टेल यू सम टाइम लेटर. अभी मत लो इसको. इतना मानो कि जैसे अल कायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहती है, विच वाज अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर. तो अल कायदा और यूएस के बीच में तनातनी तो बाय डिफॉल्ट होती ही है, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू प्रोलिफरेट देयर ओन वैल्यूज. इट वाज एन ऑर्थोडॉक्स religious group which was against western concepts, western liberal concepts. They wanted to promote shariat, all right, and they were making use of violence. बस इतना ध्यान रखो, all right. और वो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, धीरे धीरे उनको मटेरियल सपोर्ट मिलता रहा, तालिबान से सपोर्ट मिलता रहा, and they became some real powerful group. It became a militant group. ठीक है. तो अल कायदा was given protection by Taliban. So the United States government at that time said to Taliban that do not support Al Qaeda and help us eliminate Al Qaeda. Taliban did not sever the tie. Taliban refused to cooperate. So in 2001, NATO and United States launched an offensive into Afghanistan to eliminate Al Qaeda and Taliban. To eliminate Al Qaeda and Taliban. This is the Afghan war. This is the Afghan war that started in the year 2001. ठीक है? Take a snapshot. Let's go ahead then. All right. Now, in 2001, George Bush was the president of United States when he decided that he will launch offensive on Taliban. He said that in a couple of years they wanted to eliminate, all right, in a couple of years they wanted to eliminate both Taliban as well as Al Qaeda and establish democracy. है ना, ये democracy बहुत ही फेवरेट चीज है.
जब भी कोई देश उनको दिखता है कि इसके साथ कुछ पंगे लेने, वहां डेमोक्रेसी दे देते हैं वो. So in a couple of years, they wanted to establish the true democratic government in Afghanistan by elimination of Taliban and Al-Qaeda. But the problem that happened was that even after in 2001 it started and today is 2021, neither Al-Qaeda got eliminated nor Taliban got eliminated. And for that reason, somewhere around when Obama was there, the people started questioning. The people started questioning the Obama administration and the US government that don't you think that the Afghan war is actually a bigger failure than Vietnam? Afghan was turning out to be another Vietnam for US. US Vietnam में हारी थी. US could not achieve its object in Vietnam. Same is happening in Afghan war. Tremendous amount of resources are being wasted. Tremendous amount of American soldiers were being killed in Afghanistan. So the local people of the United States, they started agitating, or they started protesting against the government continuation of spending resources and soldiers in Afghanistan, and they resulted into starting off movements. All right, local protest movements start कर दिए किन्होंने? Americans ने. ठीक है. So ultimately Obama government drew a plan that they will withdraw gradually, they will withdraw forces from Afghanistan. They will withdraw forces from Afghanistan because it was turning out to be a failure. Na Taliban eliminate hua, na Al Qaeda hua. So what happened that you will see a strategic failure of America in Afghanistan. Yes, Rishabh, people started putting pressure upon the government कि call the troops back. हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारे resources खर्च हो रहे हैं, ना Al-Qaeda खत्म हुआ ना Taliban. What you people are doing there? So just come back. Just pull your troops out. That is what was the demand of the American people, and for that Obama decided to withdraw the forces. This policy of Obama was continued even by the successor of Obama, that is Donald Trump. So Donald Trump entered into direct talks with Taliban. This is a strategic defeat. This is a strategic defeat. You are entering into negotiations with the group that you wanted to eliminate. Check, it was 9/11. All right, no other interest. क्योंकि ये American war, so American war on Afghanistan, it was merely for 9/11 only. All right, Al-Qaeda के against थी और कोई बाकी yes, Afghanistan is resource rich, but Afghanistan के पास oil नहीं है, तो अमेरिका के लिए वो ज्यादा इंटरेस्ट का था नहीं. ठीक है. Okay. So Donald Trump, successor of Obama, he continued what Obama started, but the strategic defeat happened when Taliban was given recognition by the US government, and the US government entered into direct negotiation with Taliban. And finally it was decided देखो आप फोर्सेस भेज सकते हो. In Afghanistan, there was network of tunnel. There was no popular people. जब तक लोगों का support नहीं होगा ना, Richa. So Richa is asking a good question that कि sir USA is so much strong militarily, फिर भी तालिबान को खत्म क्यों नहीं कर पाई? देखो पहली चीज तो ये है कि तालिबान जो था, एक तो ज्योग्राफी थी अफगानिस्तान की which consist of very rugged topography. ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जहां पे कोई सैनिक नहीं पहुंच पाता था, कोई उनका वेपन नहीं पहुंच पाता था. So they were safe underground. Number one. Second, 1996 to 2001, 5 years. 5 years, people started developing support for Taliban. Number एक. दूसरा, they considered
Taliban to be wrongly removed from power by USA. So USA never got the popular support of the common Afghan people. Geography was there. So all these things contributed in continuation of survival of Taliban. आज अफगानिस्तान की अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन आपको पता है अभी भी अफगानिस्तान का 90% एरिया इज अंडर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ पश्तून्स व्हिच आर मोस्टली द तालिबान पीपल. एम आई राइट? तो जब लोग बागों का पॉपुलर सपोर्ट तालिबान को है, तो चाहे कितनी ताकत लगा लो, यू विल नेवर बी एबल टू एलिमिनेट देम. हाँ, कह सकते हो ऋषभ. ऑलराइट. Yeah, that's right. वियतनाम में गुरिल्ला वॉरफेयर थी जिन्हें जो अमेरिकन समझ नहीं पाए. That's right. चलिए ध्रुव, इसके बारे में टुवर्ड्स द एंड बात करता हूं. मेरे को एक सेकेंड. रिलीजन ऑल्सो हेल्प द पीपल. ठीक है. यस. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इट वाज फाइनली डिसाइडेड, अ deal was signed between American government and Taliban government, and according to this Taliban, बताता हूं, चेक 2 मिनट रुको. According to this agreement, the United States decided that by 1st May 2021, all right, ये February 2020 में decide हुआ that by 1st May 2021 the USA will withdraw its troops from Afghanistan. This was the first thing that was decided कि 1 मई 2021 को अमेरिका अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लेगी. By that time, a deal must be reached. Sorry. By that time, a deal must be reached, or agreement must be reached between the Afghan government right now as well as Taliban. Third, Taliban must distance itself. All right, Taliban must distance itself from Al-Qaeda. And it was decided that the Taliban leaders in Afghan captivity, they will be released. This was the primary subject matter of the deal that was signed between Donald Trump and Taliban. It is a strategic win for Taliban. साफ दिख रहा है. Now the thing is this, Donald Trump has gone. लेकिन एक बात ध्यान रखना कि when this thing happened, जो अफगान गवर्नमेंट थी, it became very annoyed. The Afghan government became very annoyed that the US has given recognition to Taliban. Taliban and Afghan government are like this. Taliban do not recognize Afghan government, and Afghan government do not want resurgence of Taliban. ठीक है? All right. Coming to Chehek question right now. Chehek asked, sir, if Taliban is controlling majority of Afghanistan, how is Ashraf Ghani the president? Let me tell you, Chehek, Ashraf Ghani is president only till the point there is US support in Afghanistan. It is a weak government. It is a weak government, and it is destined to fall the day United States withdraw itself back. ठीक है, 1 मई के बाद में हो सकता है ये गवर्नमेंट भी ना बचे. All right. So we'll come to this point, but before that, this deal was signed between Donald Trump and Taliban, US government and Taliban in 2020 February, and these all subject matters were finalized. Now what happened? Now comes so somewhere in September 2020, talks were organized between Afghanistan government, which is right now the Ghani government, and Taliban. However, these talks failed to come at any common agreement. No common agreement was reached.
No common agreement was reached in the September 2020 Doha talks. कतर में हुआ था. These are known as Doha talks between the elected Afghan government and Taliban. Between the elected Afghan government and Taliban. So what it was finally decided. So sorry, finally decided नहीं. अब बात आती है जो बिडेन की. So now in 2021, all right, in 2021 January, Joe Biden became the president. Joe Biden became the president, and he has continued with the legacy of his predecessor Donald Trump and agreed that by 1st of May 2021 we will withdraw the US forces. अब बात प्रॉब्लम ये आ रही है, Joe Biden has agreed for removal of US troops. No common agreement has been reached. What is going to be the future of Afghanistan if this thing happens? Yes, Rishabh, bilkul. The Middle East is in such a situation of chaos because of, number one, rudimentary and orthodox orientation. Number two, yes, factional interest, Shia Sunni conflict. And number three, the misadventures of the bipolar powers of Cold War era. USA, USSR. Yes, इन 3-4 रीजंस ने मिडल ईस्ट को एक ब्लैक होल बना दिया है दुनिया के नक्शे पे. Getting my point? This is correct. All right. So recently, after Joe Biden took up the presidency, he has given his viewpoint explicitly on Afghan future. Recently, his presidency, his team has given some viewpoints. The first viewpoint is that the Afghan government has to come in terms with Taliban government before 1st May 2021 because USA is going to withdraw. So they want a unity government. So Joe Biden is calling for a unity government in Afghanistan. They want a unity government in Afghanistan. That there should be power sharing, which must be based on the principle of power sharing. कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट दोनों मिलके गवर्नमेंट बना ले अफगानिस्तान में and rule the people for the development of Afghanistan and let United States withdraw. But this is looking like a distant dream. जब भी मीटिंग होती है तो अशरफ गनी says I am the person who is responsible for any kind of negotiation because I am the leader of the country. Taliban says this is just a stooge. This is just a representative. This is not a true representative government. So they are not recognizing the Afghan government. So this kind of tussle is making this unity government a distant dream. All right. Along with this, one more point, remember, Joe Biden want the Afghan process to be negotiated by multiple powers being involved, which include Iran, Pakistan, India, China, Russia, and USA. These 6 powers come together and start helping Afghanistan to come up. But then all these 6 powers have different interest in Afghanistan. Powers जो negotiate करेंगी उनके अपने interest match नहीं कर रहे. So how come they will be helping in maintaining peace in Afghanistan? Let me give you an example there. Like for example, if you look at India, India is not having much of good faith for Taliban. क्यों? Taliban is orthodox, believes in Shariat, and supported the terrorist who hijacked the IC-84. So India was not in favor of Taliban. लेकिन इंडिया कर क्या सकती है जब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि तालिबान के साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा? What can Indian government do? India cannot do anything. So what happened? India started the backdoor diplomacy. India started the backdoor diplomacy, and for the first time, retired Indian bureaucrats
attended a meeting where Taliban representatives were there. इंडिया ने अपने कोई सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स को नहीं भेजा, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भेजा कि पता है कि अब ये चीज इनएविटेबल है और हमारे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान में, तो हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट टुमारो देयर मे बी एन अफगान गवर्नमेंट. Just to maintain its stand, India has given the dictum that the Afghan peace process must be Afghan owned. Afghan peace process must be Afghan controlled and Afghan dictated. All right, it must be Afghan owned, Afghan controlled, and Afghan dictated. Matlab, Afghan people should themselves decide what should be the peace process. Whose peace process को कैसे execute करना है, that must be decided by the Afghan people, and Afghan people should dictate the future of the country. This is India's rhetoric. India is not in good favor of having Taliban there. Coming to the next player, Pakistan. Pakistan would be more than happy to see Taliban in power because Taliban and ISI have some good relations. Taliban and ISI have some good relations. Al-Qaeda का वो चचा था, बिन लादेन, कहाँ मिला था? Abbottabad, कहाँ है? पाकिस्तान. Getting my point? So, resurgence of Taliban will be good for Pakistan. It will be good for China. But it will not be that good for India, USA. But USA को withdraw करना is the call of the hour. Alright, क्योंकि पूरी दुनिया में अब मिट्टी पिट चुकी है क्योंकि आप पिछले 20 साल से लड़ रहे हो और कुछ नहीं कर पाए. Am I right? और आप अपने आप को सुपर पावर कह रहे हो. आपकी खुद की जनता आपके खिलाफ खड़ी है इस चीज में कि you should not send any further resource or troops. So USA has to withdraw despite it will not be a good thing for USA, India. Alright, and resurgence of China and Pakistan will be there in Afghanistan. If Taliban comes to power, India will have to take a backstep or backstage. That is no denying of the fact. But what is more troubling for this problem right now that was discussed in that article, or not discussed, it was implicit, explicit नहीं लिखा था. All right, it was an ambassador of I don't remember किसने लिखा ये article. I read it. All right, editorial है ये, एक दो दिन पहले का ही है. So that gentleman has implicitly given a very good hint. And the good hint is that Taliban leaders जो जेल में थे, they were released. And these Taliban leaders, they come from the different tribes in Afghanistan. ठीक है? एक यहाँ पे अफगान गवर्नमेंट है घनी की. There is Afghan government. Now the thing is this, आप क्या बात कर रहे हो? Power sharing. You are talking about power sharing. यानी आप पावर का बंदर बाट लगा रहे हो फिर से. You are again putting up power on the table. हर ट्राइब का अपना लीडर अपना पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है. So there will be n number of such political groups plus one the contemporary government. N plus one groups will be now competing against each other for power. तो क्या आपको 1989 की पिक्चर फिर से रिपीट होते दिख रही है? In 1989, the same situation was there. Multiple Mujahideens were there. They were competing for the power, withdrawal of the USSR, creation of power vacuum, fight for power, civil war. 2021, withdrawal of the United States, power vacuum, weak government, multiple factions, bandarbat for power. What is going to happen? There is a threat of the next civil war in Afghanistan. And if this happens, this will be even worse for India compared to the compared to resurgence of Taliban. Civil war will result into destruction of any bonhomie that we have so far with Afghanistan. So the thing is this, USA is withdrawing under the pressure from the local people. The situation is still not there set.
There is emergence of n number of different factions based on tribal orientation, and such that a power struggle is inevitable in near future. This is what the editorial of that article tries to say, according to my opinion. And it may be possible that we might witness Afghanistan entering into a civil war again. The Middle East regimes are very fragile owing to yes. All right. So what is going to be the future? Nobody can tell, but we can only have some guess about it. Resurgence of Taliban is unavoidable. अगर सिविल वॉर नहीं होता, रिसर्जेंस ऑफ तालिबान इज अनअवॉइडेबल, क्योंकि हाल फिलहाल भी 90% ऑफ अफगान रीजन इज अंडर द तालिबान इन्फ्लुएंस. तो आने वाले टाइम में तो वो लेजिटिमेटली पावर लेंगे, और अगर तालिबान ब्रेकअप होता है फैक्शंस के अंदर तो फिर सिविल वॉर बिकम्स इनएविटेबल. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज a more rigorous approach of all the stakeholders together, a greater control of United Nations in Afghanistan issues. यूएसए हट रहा है, यूएन को अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ टाइम के लिए लेनी पड़ेगी. A peaceful transition has to be there, peaceful elections have to be there, a proper power sharing agreement has to be achieved. Otherwise, things are going to be really muddy there. Shreya says, sir, re-election is not a solution. Re-election तो होगा, लेकिन आप खुद सोचो, आप इतने दिन से पावर में हो और जिस ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे थे, अब उसकी गवर्नमेंट आ रही है और वो मिलिटेंट ग्रुप की तरह है. इट्स एन आर्म्ड ग्रुप. You will you not resist? You will resist. तो यूएन को कुछ टाइम के लिए ट्रांजिशन, उस पावर वैक्यूम को ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को फिल करना पड़ेगा. यूएन को कुछ टाइम के लिए चीजें अपने हाथ में लेके फिर करना पड़ेगा. बट अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू अ सॉल्यूशन व्हिच मे और मे नॉट बी टेकन अप. ऑलराइट, सो वी हैव टू वेट टिल द 1st of May 2021 and maybe a couple of months जब तक ये चीज फाइनलाइज होती है. So do you all get a comprehensive picture of what is the Afghan situation right now? Do you all get it? चलिए, ठीक है, perfect. So now isn't Taliban kind of terrorist organization? If they come to power, will they? No. Taliban link with Al-Qaeda was terrorist organization. United States declared Taliban as insurgent group in 2001, and it has recognized as non-insurgent group in 2016, 17, 18 के आसपास. Now they consider Taliban as one of the political power, and they have asked Taliban to cut all the ties with Al-Qaeda because they consider Al-Qaeda as the terrorist group. So Taliban will be given the recognition. आपको पता है 1996 में जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी तो सिर्फ 3 देशों ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दी थी, यूएई, पाकिस्तान एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सऊदी अरेबिया. यूएई, पाकिस्तान और एक और कोई कंट्री थी. सिर्फ 3 कंट्रीज ने रिकॉग्निशन दी थी, और 2001 में तब तक यूएसए ने उसको क्वेश्चन कर दिया. अब यूएसए इज गिविंग रिकॉग्निशन टू तालिबान. दैट मींस तालिबान इज कमिंग अप एज अ परमानेंट प्लेयर नाउ. लेट अस सी व्हाट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड. ऑलराइट, सो टुडे आई हैड एक्चुअली अ क्लास टिल 12:15. इस वजह से मैं आज क्लास नहीं स्टार्ट कर पाया. From next week onwards, I will be the one who will be starting the class at 12. All right, and some of the topics will be taken up later by Piyush sir in the same class. So ये जो climate justice वाला topic है, इससे मैं next class start करूँगा, and will be taking up 4-5 very probable mains oriented questions that might be asked. ठीक है? Now, so why Taliban is not good for India? Taliban is not good for India. Number one, Taliban and ISI, they have some good links. जब यूएसए अफगानिस्तान में वॉर कर रहा था तो पाकिस्तान was the one that protected many of the Taliban leaders. So now will be the time to repay back. Number one, interest of Pakistan in Afghanistan will be more, and India's interest will shrink. Second, IC-84 incident में India wanted support from Taliban. Taliban supported the militants instead. वो मसूद अजहर वाला जो काम हुआ था, ठीक है, जैश-ए मोहम्मद and all that thing. So all these things are resulting into India not feeling well about the future of Afghanistan. इसीलिए इंडिया ने वो आइडिया दिया था that the peace process must be Afghan owned, Afghan controlled and Afghan dominated. ठीक है, चलिए.
So I'll close the session here. आप लोगों को भी 3 घंटे के आसपास हो गया. After that we are going to from next week onwards हम start करेंगे climate justice के साथ and many other topics to cover. All right, and please cover the situation in Iran also once. Taken. All right, I will take care of this Iran thing completely. Richa says, today I came to know Afghanistan in such a bad condition, how their common people survive. Yes, yes. Common people are, देखो वही बात होती है, लड़ाई होती है सिर्फ उनकी जो ताकत में होते हैं और पिसते कॉमन पीपल हैं. सो अगर मैं आपको क्लास में सिर्फ 45-50 मिनट में ये चीज एक्सप्लेन करके इतना फील बैड हो रहा है आपको, तो सोचो वहां पे असलियत में कंडीशंस क्या होंगी. ऑलराइट, चलो सीरियन क्राइसिस, ईरान का तो मेरे को पिकअप करना है एक टॉपिक. ऑलराइट, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक अ कंप्लीट लेक्चर ऑन. ठीक है, तो करेंगे इसके ऊपर बात. ठीक है, ऑलराइट. देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स. रिया, देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स. खत्म हो जाते हैं ये फंडामेंटल राइट्स. सिर्फ डेमोक्रेसीज में मिलते हैं. जो देश वैसे ही घिसे हुए हैं अभी वॉर के अंदर, वहां क्या फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? दे आर ऑल यूटोपियन थिंग्स देयर. वहां रोटी खाने को रोटी नहीं है. फंडामेंटल राइट्स का क्या करेंगे वो लोग? ऑलराइट, चलिए. हाँ, यस, तिब्बत नेपाल. यस, तिब्बत नेपाल. देखो क्या टाइम आ गया है कि एक टाइम पे जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता था रीजन में, नेपाल, आज उसके साथ हम टेरिटोरियल वॉर्स खेल रहे हैं. So yes, it's a topic worth discussing. In fact, Kala Pani and all these things have been discussed in one of the previous lectures. But जैसे ही कोई टॉपिक आएगा तो हम वहां पे करेंगे इसको डिस्कस. ऑलराइट, चलिए. ऑलराइट श्रेयांश, ये सब उसके साथ कवर कर लेंगे, ईरान के साथ में. ओके ओके एवरीवन, सी यू next week 12 o'clock Saturday, and nice to see you all again. Bye. Okay, bye.